अपने पेरेंट्स को ये 2 घंटे का सेशन जरूर दिखाना, so that they have also have an idea of what you are doing. That is also equally important. ये सबसे important चीज है to clear prelims or to clear this exam at any point. I would strongly recommend that you attend these classes. कि आप ये क्लास अटेंड कर लें, आपका CSAT फेल नहीं हो सकता. This is my guarantee. थर्ड टाइम एग्जाम देके तीसरी बार एग्जाम क्लियर किया, 173 रैंक लाई, and then he went into Indian Revenue Service income tax. That person is going to teach you GS4 and SC. This is the power of templates in mains exam. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, एंड दिस इज व्हाट आई विल एंड विद, एंड प्लीज राइट दिस इन दैट नोटबुक. और उस नोटबुक का क्या करना है अब मैं आपको वो भी बताऊंगा. काम हम इस लेवल का कर रहे हैं कि आप अगर इसको फॉलो कर लो, विद इन 3 months यू विल रियलाइज दैट यू आर वे अहेड ऑफ द कंपटीशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब आई होप यू नो इट्स ऑल ऑडिबल एंड विजिबल लाइक आई हैव कंफर्म्ड इन द चैट. अब स्टार्ट करते हैं. पहले आज के सेशन का एक फॉर्मेट देख लेते हैं. सी आई हैव some very important details to communicate to you about your next 1.5 years. तो पहले तो एक काम करेंगे. I would ask all of you to please get out a notebook, and it cannot be any notebook. One notebook which I want you to get out a new notebook, right? I will give you 2 minutes to get that. आप 2 मिनट में एक नई नोटबुक ले आइए please, and keep that as one of the notebooks that is separate. ये किसी सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं होनी चाहिए. इस नोटबुक में you will only note your progress over the next 1.5 years. इस नोटबुक की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा. We'll talk about that, but please get a new fresh notebook that has nothing written inside it and one pen for today. And आगे भी इस नोटबुक को कैसे यूज करना है उसके बारे में we'll talk about. What all the things you have to write in this notebook over time, that also we'll speak about. So first, please get this notebook out, and whatever I say today, right, please keep writing that, because see, once you write, it will get reinforced. It is not our ideology here, even when the classes will happen, and I'll tell you this today, it is not our ideology that we dictate things to you, कि हम dictate करें आप लिखें, because you are not school children, right? I understand that most of you are either in college or have passed out of college and now are serious students who are trying to make it through the toughest exam of this country. So I will not dictate things to you. It needs to be your habit to write things down with me. So whatever you see on the board, keep writing to get a context. ठीक है? This notebook needs to be a different notebook from any other subject notebook that you have. और इसी notebook में throughout the next 1.5 years, we are going to note down our progress also. Firstly, is this thing clear? जब ये चीज हो जाएगी, then we'll properly start. इस notebook में और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए. We will keep this notebook as our planner for the next 1.5 years. And इसी notebook को use करेंगे. So pick out a good notebook. For example, this is my planner notebook, right? Blinkit पे मिलती है. This is the one that I use. Anyway, अब What is the agenda of today's session? आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? Now from this point you should start writing. ठीक है? The agenda of the session is as follows. Firstly, we will discuss this. What exactly is needed for UPSC CSE, right? Beyond the syllabus, beyond what is you have to read, everyone knows that यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना है, prelims है, mains है, interview है. That is for sure. वो तो है ही. But what do we need beyond that? That is something we'll discuss today. Then what can you expect from this course? इस course से आप क्या क्या expect कर सकते हैं? The things that we are going to have over the next 1.5 years. How can you use this course most effectively? Right? For example, I'll give you an idea. इस साल जो हमने एक course किया called MMP Plus, Mains Mentorship Program Plus. Right? This course had approximately 2,500 students in it who were giving the mains this year. Out of those 2,500 students, 600 qualified the mains, right? So 1/4 of these people who were here got through the mains and they are giving the interview right now. That means some people were able to use this course better than others. तो ये चीज हमें आज समझनी है. How to use this most effectively, right? Although we will keep having such sessions, I will keep having such sessions with you. I have to teach you economics also, तो तब दोबारा इस बारे में बात करेंगे. But you should know this at the start point. Then प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 1.5 years. अगले 1.5 साल में हमें कैसे प्लानिंग करनी है, कब प्रीलिम्स का पढ़ना है, कब मेंस का पढ़ना है, कब टेस्ट देने हैं, ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस टुडे. नाउ दिस वुड बी अ ब्रॉड प्लान, दैट वी हैव made or charted out for ourselves for the entirety of the year and the entire next 1.5 year. But we also need to discuss our daily planning and targets. तो एक हम broad plan discuss करेंगे कि अच्छा है next 1.5 years में क्या करना है. We'll also discuss what we have to do through a week and each day, etc., etc. Then we will discuss this major topic. What about optional subject? A,
when to select optional subject, B, how to select optional subject, C, how to prepare optional subject. ये तीनों discussions हम आज करेंगे. Then our idea of note making. How does note making need to happen, and what is the most effective way to make notes for this exam? I will also discuss this concept with you called active recall. This is nothing but how you have to study. Right? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज. स्टार्ट करते हैं यहां से. एक्चुअली रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लेट्स स्टार्ट विद what is needed. We'll come back to what can you expect from this course, but let's talk about what is needed first. यहाँ से start करते हैं. I hope you are all writing, right? Let's understand the components of what we need to do over the next 1.5 years. The fact is, we are aiming for UPSC CSE 2026. We will have our prelims examination in May 2026. We'll have our mains examination in August 2026. अभी UPSC ने next year का calendar निकाला नहीं है, but this is on the basis of the dates this year. जैसे 2025 में May में there is the prelims exam, 2025 में August में the mains exam is starting. So we are assuming the dates will be the same. And over the last 5 years, barring the COVID years, these have stayed the same. So we'll assume these dates to be the same. We'll also talk about what is needed for the interview. तो पहले ये बात कर लेते हैं कि इन तीनों stages के लिए अलग-अलग क्या चाहिए, right? See, firstly, you need to understand that these three components, the prelims, mains and the interview, are three very different exams. अगर मैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो जो प्रीलिम्स है वो हमारा एक वन डे इंटरनेशनल के बराबर है. Why? Because we have two papers. One is in the morning, one is in the afternoon. Both these papers are MCQ papers of 2 hours each. I hope you all know the format now. है ना? So it is like a one-day exam where on one day we'll give two papers and our fate will be decided. Then we come to the mains. The mains is a 5-day exam. It runs over 5 days. There will be 4 papers of GS, 1 paper of essay, 2 language papers and 2 optional papers. 2 optional papers, of course, of the same subject, but 2 papers nonetheless. And this runs over 5 days, so it is like a test match. Right? And finally, we have our interview. An average UPSC CSE interview runs for about 30-35 minutes. My interview, for example, ran for 35 minutes. So this, let's say 35 minutes here. So basically like a T20. Right? So in this exam, we have to have 3 different type of things that we have to clear. So 3 different type of skills are required. Right? So first, let us discuss the skills that are required for these 3 things. Then we'll discuss what we can do here, you and me together, so that we have all the requisite skills needed for our best performance on all 3 of these days. Right? Now that the session has started, I'll also talk. I hope most of you know who I am, but I would also want, that you show this to your parents. It is a sincere request. अपने parents को just take some time, ask them to take some time out and at least watch this session. ये 2 hours के आसपास का सेशन होगा. अपने पेरेंट्स को प्लीज रिक्वेस्ट करना, एंड वी विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जस्ट फॉर द सेक दैट योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो वॉच इट. अपने पेरेंट्स को ये 2 घंटे का सेशन जरूर दिखाना, so that they have also have an idea of what you are doing. That is also equally important. So just for your parents and for people who don't know me, I am Dr. Shivin Chaudhary. I did my MBBS from Maulana Azad Medical College. Post that, I gave the UPSC Civil Services exam. In 2022, my rank in the UPSC Civil Services exam was 297. And I was in the Indian Revenue Service, income tax. So I had cleared this examination in 2022 in my second attempt. After that, I decided that I wanted to teach. So I quit from the civil service and now I teach full time here at Sarrthi IAS. In this course, I will be teaching economy, science and tech and environment. And the idea here is in today's session to explain what is needed throughout this entire journey and what we're going to discuss, what this course can do to help you perform in the best manner possible. So please do show this to your parents also. बिकॉज जितना भी मैं आपसे कह लूं कि आपको पढ़ना है, हम आपकी ट्रैकिंग करेंगे, हम आपके टेस्ट के स्कोर्स देखेंगे, देयर इज नो बेटर एक्चुअल ट्रैकर ऑफ पढ़ाई देन योर पेरेंट्स. राइट? दे डेफिनेटली आउट ऑफ एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड दे केयर अबाउट यू द मोस्ट. एंड उनकी जो एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स यू, दे आर प्रोबेबली द प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो आई वुड वांट दैट दे आल्सो वॉच दिस सेशन विद यू. एटलीस्ट उनको भी पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं अगले 1.5 साल में. पहले लेट अस डिस्कस दीज 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल. राइट? इन 3 कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं.
if you're all aware of the format of this examination, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. We'll keep this brief, right? In the prelims, we have two papers. One is general studies paper, one is CSAT paper. In the general studies paper, these are the following subjects that are there in the syllabus. This is directly from the UPSC notification. यहीं पे उसका स्क्रीनशॉट है. I will give this PDF to you and also share this PDF with your parents. Okay? अब वही PDF में जो स्क्रीनशॉट लिया था उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है in a simpler format. The things are written here. What are the syllabus points of this examination, right? So in general studies, we have geography of India and the world, polity and the Indian constitution, economy and social development, modern Indian history, ancient and medieval history. This includes a component of art and culture. We have science and technology, environment and ecology, and current affairs. These are the main things that will be asked to us in the prelims exam. The prelims exam will be, especially general studies paper, will be 100 questions, 2 hours time. For every correct answer, we will get plus 2 marks. For every wrong answer, there is 1/3 negative marking. So minus 2 by 3. This is the negative marking. And we have to clear a cutoff. Generally, this cutoff marks, generally, the trend that we have seen in the last 5 years, this cutoff marks is somewhere around 90 marks out of 200. How is this cutoff calculated? Only the best people are taken. जैसे prelims में से हमें ये देखना है कि जो prelims clear करेंगे, those people will be giving the mains exam. So let's say the UPSC has decided that this year 13,000 people will be giving the mains. तो best 13,000 को यहाँ से वो ले लेते हैं. How does UPSC decide कितने लोगों ने मेंस देना है? It depends on the vacancy. So the format here is simple. The government first gives to the UPSC the number of vacancies in the civil services. जैसे इस साल की vacancies का number है 979. जो भी vacancies का number होता है, generally again the trend in the past few years has been this number is around 1,000. From various civil services, जैसे IAS की vacancies have been fixed at 180. IPS की have been fixed at 200. बाकी सर्विसेज में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है. IRS for example will be around 100. IRS income tax, IRS customs will be around 50. IFS Indian Foreign Service will be around 30. These vacancies are then given by the government to the UPSC first. UPSC multiplies this number into 13. Not exactly 13 but somewhere around that to come to a number. Let's say 13,000 here. This is the number of people who will be appearing in the mains exam. Now, how will we decide which 13,000 will be appearing in the mains exam? We will take the best 13,000 from here. तो यहाँ पर the person who is the last, जिसकी 13,000th rank है, उनके जो मार्क्स होंगे उसी को हम कट ऑफ की तरह डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? तो जो इस पर्सन के मार्क्स हैं वो कट ऑफ बन जाता है. सो कट ऑफ इज नॉट फिक्स्ड बाय यूपीएससी, इट इज कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्मेट एंड जनरली वी हैव सीन दैट कट ऑफ is about 90 to 200, 90 out of 200. This is like a good idea of cutoff. We here will aim that we score 100 plus marks in the prelims, ताकि हमें ये डिस्कशन रहे ही ना कि प्रीलिम्स को लेके क्या दिक्कत है. कोई दिक्कत नहीं रहे, बिकॉज 100 प्लस पे प्रीलिम्स हो जाता है 100%. This has been the trend over the last 5 years. Just to give you my example, I have given 2 attempts. In 2021, my prelim score was 115. In 2022, my prelim score was 110 out of 200, of course, both times. And कट ऑफ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों सालों का, तो आपको आइडिया हो जाएगा. 2021 का जो कट ऑफ था वो था 87 मार्क्स, 22 का कट ऑफ जो था वो था 88 मार्क्स, राइट? लास्ट ईयर का कट ऑफ अभी नहीं आया. 23 में देयर वाज अ फिनोमिनली टफ पेपर, तो 2023 का जो कट ऑफ था, 2023 का जो कट ऑफ था दैट वाज 75 मार्क्स. काफी टफ पेपर आ गया था, तो कट ऑफ आल्सो ड्रॉप ड्रास्टिकली. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर और द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, आप इससे पीछे भी देख सकते हैं. On the basis of this analysis, we can say that if we score 100 plus marks here, we are getting through the prelims. It's not going to be a problem, right? This is the first paper of prelims जिसके basis पे cut off decide होता है. But there is another exam in the prelims called the CSAT. CSAT में क्या होता है? CSAT is basically an English plus maths paper. English plus maths का paper है. There are going to be 80 questions of
2.5 marks each. 80 into 2.5 is again 200. यहां पर यूपीएससी ने क्लियर कट लिखा हुआ है that in paper 2 of the civil services preliminary exam it will be a qualifying paper, minimum qualifying marks are fixed at 33%. तो हमें यहां पर out of these 200 maximum marks we have to get 66 which is 33%. जब ये मार्क्स हम ले आएंगे तो हमारा सीसैट क्लियर हो जाएगा. अब यहां पर हमारे 67 आए या 167 आए या 107 आए, it does not matter, we just have to qualify this paper. Cut off will be decided on the basis of general studies. अब यहां पर जनरली हमें सुन के लगता है कि ये तो बहुत आसान है, राइट? इसमें हर क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए गेटिंग वन क्वेश्चन राइट इज 2.5 marks. If we get something wrong, it is again same 2.5 divided by 3. 1/3 negative marking हमारी रहती है, minus 2.5 divided by 3 if we get something wrong. 1/3 negative marking and correct answer पे plus 2.5 marks. So it generally we feel कि English और Maths का पेपर है, ये तो हम कर ही लेंगे. Let me tell you, more than 20% of people who are appearing in prelims every year are failing in this paper. तो सारी मेहनत कर ली, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जनरल स्टडीज में अच्छे मार्क्स ले लिए, यहां पर we have seen very good students also failing. So we have ensured that we dedicatedly teach you CSAT in this course. Even if you are good at English and Maths, अगर आप इंजीनियर हैं, आप IIT से हैं, आपने बहुत अच्छे, आपने GMAT क्लियर किया हुआ है, CAT क्लियर किया हुआ है, तब भी मैं आपको कहूंगा कि take this seriously. This is something that is important and that is why we have kept a dedicated time to teach you this subject also. ये qualifying है तो हम इसको ignore नहीं करते हैं, right? अब so this is broadly the prelims examination. अब let us talk about what is needed for the prelims exam. Mains पे मैं आऊंगा. पहले बात करते हैं कि prelims के लिए क्या जरूरी है. What is needed to clear this prelims exam. आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपको चैट में जवाब देना है. Let's see your understanding, then I'll tell you what is my thoughts on this. तो क्वेश्चन ये है, स्किल भी हटा देते हैं यहां से जस्ट टू मेक इट इजियर. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर प्रीलिम्स. देखो एक्चुअली क्या कहानी है, इन दिस इकोसिस्टम पीपल विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी इस कोर्स की जब मैं आपकी बात करूंगा तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड मैं ये बात क्यों कह रहा हूं. बहुत लोग हैं एडवाइस देने वाले, राइट? एंड सिंस देयर आर टू मेनी पीपल गिविंग टू मेनी एडवाइसेस, देयर इज अ वेरी कॉमन इंग्लिश सेइंग दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, राइट? हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? यार आपसे मैं पूछता कि किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप क्या कहते हैं? नॉलेज, राइट? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? बट क्योंकि एक वो इकोसिस्टम है कि पीवाईक्यूज करने होते हैं, कंसिस्टेंट रहना होता है, डिसिप्लिन लगाना होता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करनी होती हैं, प्रैक्टिस करना होता है, खुद को एनालाइज करना होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली let me write all of the answers that you have given. कई लोगों ने, बहुत लोगों ने PYQs लिखा, which is a very good thing. PYQs, consistency, discipline, analysis, logic. All of these things are pointing towards what? Why do you need consistency? Why do you need discipline? Why do you need good analysis? Why do you need logic? Why do you need to solve previous year questions? So that you have good knowledge. And this knowledge comes through conceptual clarity. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू क्लियर प्रीलिम्स और टू क्लियर दिस एग्जाम एट एनी पॉइंट. मेंस में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछता तो यही आंसर रहता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. इट इज 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इसके ऊपर नहीं है कुछ. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट reducing the importance of these things. Of course these are very very important things, but all of them are only serving to increase our knowledge. Ultimately we need to have clear concepts, right? And this is what takes us
through this exam, not only prelims, not only means, not only interview, हर जगह पर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, and this is what is going to be our main focus. अब पहले बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एग्जांपल देता हूं. लेट मी शो यू व्हाट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मींस. आप में से बहुत लोग दिल्ली एनसीआर में से होंगे, नहीं भी होंगे तो उन्हें दिल्ली एनसीआर के बारे में काफी पता होगा. यू वुड ऑल नो दैट दिल्ली हैज अ पोल्यूशन प्रॉब्लम. दिल्ली में एक पोल्यूशन प्रॉब्लम है, राइट? आपके जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, सर एंड मैम, आई एम श्योर आपको भी ये पता होगा दैट दिल्ली हैज अ ह्यूज पोल्यूशन प्रॉब्लम, राइट? कुछ फैक्टर्स तो दिल्ली के ही हैं, that okay, there are some industries around Delhi, there is, let's say, lot of vehicular traffic in Delhi, there is a lot of dust in Delhi, right? But what is the reason? जैसे जब हम दिवाली के टाइम पे देखते हैं, दिवाली के जस्ट पहले we will see Delhi's AQI spiking a lot, sometimes even reaching levels close to 1000, which is the maximum measurable air quality index. Delhi वहां पहुंच जाता है at the time of दिवाली, somewhere around that, नवंबर दिसंबर में ये काम होता है. Does this happen in Delhi? उसी टाइम पे क्यों होता है? Why always in October, November this problem happens? एक बार इसका जवाब देना. ये बात आपको आई एम श्योर पता होगी. अक्टूबर नवंबर में इतनी पोल्यूशन क्या होता है? आपने सुना होगा कि स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलाना जिसे कहते हैं. दिस इज द रीजन कि स्टबल बर्निंग होती है इन नेबरिंग टाउन, स्पेशली इन एरियाज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टबल बर्निंग. अगर हम दिल्ली का मैप देखें तो दिल्ली इज समवेयर हियर, राइट? ऐसे दिल्ली है, यहाँ पे यमुना रिवर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ईस्ट दिल्ली वाला पार्ट है. हियर इज द स्टेट ऑफ यूपी. दिस इज ऑन ऑल थ्री साइड्स. हियर दिस इज समवॉट द स्टेट ऑफ हरियाणा. डायग्राम पे मत जाना. दिस इज द स्टेट ऑफ हरियाणा. हियर देयर इज द स्टेट ऑफ पंजाब. इधर पंजाब है. हरियाणा और पंजाब और यूपी के रीजन में स्टबल बर्निंग होती है, and because of the wind pattern, all of this stubble burning smoke is coming towards Delhi and Delhi gets polluted. ये बात आप में से कई लोगों को पता होगी. This is what is actually happening. The wind is taking this smoke from these farms of Punjab and Haryana and taking it towards Delhi, and Delhi gets engulfed in smoke. उसके बाद क्रैकर्स और एक्सेट्रा का जो रीजन है वो है, बट दिस इज द मेजर रीजन. दिस इज द मेजर रीजन. अब क्यों हो रही है इतनी स्टबल बर्निंग? Now, this is something you all must have heard about, right? ये बात आपने जरूर सुनी होगी. आपको मैं बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या होता है. Why does this stubble burning happen? ये stubble burning, why do farmers burn the stubble? एक आंसर आप लोगों ने दिया that okay, clearance of waste is fast. ठीक, ये भी बात सही है कि clearance of waste is fast, etc. etc. ये बात, this is clear. अब why does the farmer want fast clearance of waste? If this is the problem that हमें नया crop sow करना है, इसीलिए हमें जल्दी, we need to clear the farm very quickly because we have to sow the next crop, right? Crop तो seasonal होते हैं, right? There is a time of sowing each crop. Let's say time of sowing one crop is in December. अभी crops की details में नहीं जाते, रबी खरीफ ये सारी बात भी यहाँ करी जा सकती है, but let's just take this for example, that time of sowing one crop is December, right? And you know that on 1st December you have to sow the crop. 1st December को आपको sow करना है, right? और ऐसा it's not fixed on a date. ऐसा होगा कि अच्छा between November and December sometime you have to sow the crop. तो ऐसे लिख लेते हैं. Let's start from these months: May, June, July, August, September, October, November, December. Let's say here you have, somewhere here you have to sow the next crop. कौन सा क्रॉप है इसमें नहीं जाते, कंसेप्चुअली देखते हैं. अगर यही प्रॉब्लम है that I have to clear this quickly, right? Let's say I am sowing current crop here. मैं करंट क्रॉप यहां सो कर रहा हूं. I will sow it here. I will grow this crop till this time. Here I will harvest this crop. And now I have very small time to sow the next crop, so I have to clear my field. यही प्रॉब्लम कह रहे हो आप? This is all of you are agreeing that this is the problem, right? यहां पर टाइम कम है, जल्दी से क्लियर करना है तो बर्न कर देते हैं फील्ड को, राइट?
then it is very easy for me to say that okay, let me take this crop, इस क्रॉप को मैं उठाता हूं और इसको मैं यहां सो कर देता हूं. Let me sow it in May. I will have enough time. Then I will not need to burn the crop. टाइम बढ़ जाएगा काफी. अगर जून की जगह मई में सो हो जाएगा, मई नहीं होगा तो मई स्टार्टिंग में हो जाएगा. I'll get more time here. Once I get more time here, I will not need to burn the field. अगर इतना सिंपल सोल्यूशन था तो क्यों नहीं हो पा रहा ये? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? अब ये बताओ. आप कह रहे हो रेन कब आएगी, मॉनसून एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक बात बताओ, देखो आप लोगों ने बहुत कॉमन आंसर दिया रेन. यू सेड बिकॉज ऑफ रेन पैटर्न्स आई कांट डू दिस. ये प्रॉब्लम किन स्टेट्स में आ रही है? आपको सोचवा रहा हूं मैं जान के. आई कैन गिव यू द आंसर डायरेक्टली, बट आई वांट यू टू थिंक, एंड दिस इज व्हाट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू ओवर द नेक्स्ट 1.5 years. तभी मैं ये एक्सरसाइज आज आपके साथ डे 1 पे कर रहा हूं. रेन इज द प्रॉब्लम. किन स्टेट्स में हो रही है ये प्रॉब्लम? स्टेट्स में हो रही है प्रॉब्लम हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में. आर दीज स्टेट्स रेन फेड एग्रीकल्चर बेस्ड? या ये तो यार हमारे सबसे एडवांस्ड स्टेट्स हैं फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड. दे आर नोन एज व्हीट बास्केट, राइस बास्केट ऑफ द एंटायर कंट्री, राइट? तो यहां पर तो देयर इज इनफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल. ग्राउंड वाटर इरिगेशन इज अवेलेबल, ट्यूब वाटर इरिगेशन इज, ट्यूबवेल इरिगेशन इज अवेलेबल. इन केस कैनाल्स आर आल्सो अवेलेबल हियर. इन केस रेन नहीं भी आती, वी कैन यूज ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर यूज करके हम क्रॉप प्लांट कर देते हैं. तो रेन से तो कोई दिक्कत नहीं है. अब बताओ क्या इशू है? अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. एंड दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी. These states, especially the state of Punjab, has a huge water problem, right? We have seen these in the newspapers also. Groundwater issues, water nahi mil raha, etc., etc. There is something called the Punjab Subsoil Conservation of Water Act. पढ़ाऊंगा आपको एनवायरमेंट में, so don't need to worry right now. ये कहता है that if you plant crops in May, you will need groundwater. Already groundwater is in a very bad situation in Punjab and Haryana. So please delay the planting of your crops till the time of June and July, so that you can get some rain assistance. Rivers are flowing with more water, and from there you can water your crops, so that we can save our groundwater. Once this happens, the farmer has less time at this time to sow the next crop, so they resort to burning. Second thing, अगर less time भी है, why is farmer burning the crop? Burning से कोई बहुत ज्यादा fertility में increase नहीं आता. There is a fertility increase. Fertility is not the main reason for this burning. I'll tell you what the main reason for this burning is. The main reason for this burning is, let's say this is the crop. ऐसे कुछ प्लांट दिखता है. यहां पर हमारे प्लांट की रूट्स हैं. This is the plant, this is its stem. फिर यहां पे grains होंगे, right? Let's say this is a wheat crop, something like this is there. Normally earlier, how were we harvesting the crop? Harvesting means we have to take out the grains from this crop. Earlier लोग hand से इसको harvest करते थे. Hand से निकाला plant, फिर harvest किया, फिर winnowing की, etc. Then there came a machine called a harvester. Harvester is a tractor-like machine. वो एक बारी में पूरा फील्ड आपका हार्वेस्ट कर देता है, राइट? तो आपको हैंड से बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है हार्वेस्टर यूज करना. These states, Haryana, Punjab and UP, are states where farmers are relatively, compared to rest of the country, they are rich, so they can use harvesters. Harvester यूज करते हैं तो हार्वेस्टर जो कटिंग करता है वो इस टाइप की करता है. It cuts the plant like this. Once harvester has done the cutting, the plant appears like this. Roots उसकी रह जाती हैं soil में, and some part gets remained. अब after harvesting of this crop is done, farmer now has less time. Farmer is here and farmer has less time. And उनके फील्ड में इस टाइप के प्लांट्स अभी भी हैं, सिर्फ इतने छोटे, बहुत छोटी स्टेम्स उनके पूरे फील्ड में पड़ी हुई हैं. Now one option is he can pull out this plant by hand, but if he start pulling out by hand, तो हार्वेस्टर खरीदने का पॉइंट ही क्या हुआ, right? He also has a time shortage,
So at this time, the best alternative available is burn it. Now when you burn, this will release smokes. These smokes will, because of the wind pattern, center around Delhi. This is why stubble burning is leading to huge pollution in Delhi NCR at the time of October November. पहले बताओ ये बात समझ आई. एंड मोर देन दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा. इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेटिंग क्लियर? Let's not go into detail of what this concept is. Understand that mechanization, the idea of Punjab Subsoil Conservation of Water Act, and the fact that people would want to avoid pulling out these plants is the reason why stubble burning is happening, right? Plowing will not help, etc. Pradeep, again, we're not going into the concept. The idea is at least you understand how we have to read in detail. Now when we're reading about pollution in Delhi, we'll read about all these things. We'll read about all the background, not just the fact कि हमने pollution पढ़ लिया. This is what I expect from you in this entire 1.5 years. अब आपसे एक बात पूछता हूँ, what is one good solution to solve this problem? बस ये बात discuss करके we'll get back to the slides. What is one good solution to solve this problem? Now you understand the problem. Solution क्या है? अच्छा, एक चीज देखते हैं. If I had, there are two types of solutions. One is, एक मेरे पास ऐसी मशीन हो that is despite having this in the field, it can sow the next crop. यही प्रॉब्लम थी ना, ये होने के बाद मैं नेक्स्ट क्रॉप सो नहीं कर पा रहा था. I can have a machine that can sow the next crop despite having this in the field, or I can have a type of chemical that would help decompose these plants ताकि मुझे इनको बर्न ना करना पड़े, राइट? ये दोनों सॉल्यूशंस हो सकते हैं. लेट मी शो यू समथिंग. आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्राउजर सो दैट वी कैन सी समथिंग. लुक एट दिस. आई होप यू कैन रीड दिस. दिस इज एन एआई जनरेटेड समरी, बट ओके, हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं. ये देखो, दिस इज फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट. बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी फॉर स्टबल बर्निंग मेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ये बनाया गया है सो दैट वी कैन हैव स्ट्रॉ मैनेजमेंट. अब ये करंट अफेयर्स में आया 2022 में, बट नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ करंट अफेयर्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल लिंक्ड. इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया. देयर हैज बीन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जाम ऑन दिस एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी, राइट? अब देखो यहां पर लिखा है ऑल ऑफ दीज थिंग. नाउ व्हाट विल बी रिटन हियर कि अच्छा हमने कैसे ये बनाया, इसमें कौन कौन से फंगाई हैं, ये केमिकल कैसे बना. बट नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. आपने बहुत बार ये सुना होगा कि पीआईबी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड आई एम टेकिंग दिस टाइम, वी हैव टेकन दिस हाफ एन आवर सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. अगर आपको ये बात आज समझ आ गई तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अगले 1.5 साल के लिए. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमें करना क्या है? नॉट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट द आइडिया ऑफ हाउ एनीथिंग हैज टू बी रेड, एंड देन इट विल मेक सेंस टू यू इन द एंड. अगर हमने ये कर लिया, this is what will take us through. This is what differentiates a good student and an average student in this exam. ठीक है? This is what is required. Now let's get back to what we were reading. In the prelims exam, these are the subjects. The basic thing that we require is conceptual clarity. ठीक है? अब what is the ideal way to prepare any subject for prelims exam? अब इस पे आते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो उसका आइडियल तरीका क्या है. द आइडियल तरीका इज फर्स्ट यू रीड एनसीईआरटी ऑफ दैट सब्जेक्ट और द स्टैंडर्ड बुक. जैसे पॉलिटी में मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ो. ज्योग्राफी में मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो. सो इधर रीड एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक. देन देयर इज वन रेफरेंस बुक जहां से हम ऐड करेंगे. सो फर्स्ट एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, इनमें से कोई एक पढ़ेंगे. देन वी विल ऐड फ्रॉम अ रेफरेंस बुक. We will focus on absolute conceptual clarity. Then we will practice the previous year questions of prelims. Once we have done that, we will learn some more things here जो हमारी बुक्स में या तो हमसे मिस हो गया हो, या there are some things that we need to add. So we will learn these things here and add again to our notes. Then previous year questions are limited given by UPSC. We also need to do some MCQ practice. We will do some MCQ practice along with this.
ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद अगेन वी विल लर्न सम न्यू थिंग्स, दीज थिंग्स वी विल ऐड टू आवर प्रीवियस नोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, and finally our final notes will be prepared and these we will revise. So again, please note this down that for any subject that we have to prepare in the prelims, the idea is simple. First we will read the NCERT or the standard book, then we will add ones from our reference book, then we will focus and ensure that we know the concepts, then we will solve previous year questions. Whatever we learn here we will add. तो यहां से हम let's say हम notes बनाएंगे. From these three places we'll make notes. Whatever we learn here we will add. Then we will do MCQ practice. And from here also we will add, and finally these notes we will revise. अब मेरे को एक बात बताओ, दिस प्रोसेस इज द आइडियल प्रोसेस, बट अगर आपको यही करना था तो आप यहां क्यों आए हो? आवर जॉब और माई जॉब और ऑल ऑफ आवर टीम्स जॉब हियर एक्सक्लूसिवली इज टू इंश्योर कि ये जो इतनी लंबी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये हम आपके लिए सॉल्व करें, राइट, एट ईच स्टेप. देखो ये बात समझो यार, द ओनली थिंग इन दिस एंटायर एग्जाम साइकिल दैट यू कैन नॉट रिकवर इज टाइम. एक बार आपका टाइम चला गया, टाइम विल नॉट कम बैक, एंड इट इज द मोस्ट essential valuable resource in this entire preparation cycle. Leave everything else aside, time is the most important. This is a fairly time consuming process. तो मेरा काम यहां पर क्या है, या हमारी टीम का काम यहां पर क्या है कि ये काम हम आपके साथ करवा दें और आपको श्योर हो कि मिनिमम टाइम में करा दें. जितना टाइम आपको लगे ये काम करने में, वी कैन ensure that you can do it in less than half of that time. That is our main job here. So जितने भी लेक्चर्स या प्रीलिम्स के लिए जो भी हम पढ़ेंगे, they will be having this sort of mindset. What we are going to do here is we are going to take video lectures here to cover this. This is what we are going to cover in the lectures. इस लेक्चर्स के साथ we will give you notes that are already made. Lectures and notes will already be given to you. आपको फर्स्ट क्लास में जब आपकी स्टार्ट होगी विद पॉलिटी, आपको वहीं पे समझ आ जाएगा. We'll give you notes that are already made. We'll take lectures that will ensure that all of these things are covered. Now I know आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मुझे ये बुक्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी. My recommendation is read them once and read them once like a challenge from me. मेरी तरफ से क्या चैलेंज है, अगर आपको इन बुक्स में कुछ भी ऐसा मिल जाए, कुछ भी जो इन लेक्चर्स में कवर ना हो तो बताना. I would still want you to read them because read करने से, बुक पढ़ने से हमेशा it is a better idea. हमें एक holistic picture मिलती है. The things get reinforced in our head. But this is my promise to you that from the NCERTs, the standard books, from the reference books, nothing that is relevant will be skipped in these notes or these lectures. तो सबसे पहले we'll be covering this process through lectures and notes. Then अब PYQs करना आसान काम नहीं है. PYQs शुरू में तो हमें बहुत we will have a lot of zeal to do it, तो हम कर देंगे. PYQs में हम क्या करेंगे, we will take specific sessions on PYQs where we will solve PYQs with you live in the class. आपने पहली क्लास करी, let's say ज्योग्राफी की आपकी क्लास हो रही है, आपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा. यूनिवर्स के जो PYQs हैं वो आपको क्लास में ही सॉल्व कराए जाएंगे एज अ टेस्ट, और उनके ऑप्शंस और उनके जो आंसर्स हैं they will be discussed in class. जैसे मान लो मैंने आपको अभी स्टबल बर्निंग के बारे में पढ़ाया. Ideally, if I was teaching this in class, I would now ask you to do some previous year questions with me. I would run a timer here of 1 minute, show you a previous year question and say कि अच्छा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, right? And then I would show you how I would solve it. इसमें ये ऑप्शंस क्यों हैं, etc. etc. So PYQs also we'll be doing as part of these lectures. Every Sunday from the next week when your classes will start, every single Sunday we are going to have tests. और इन टेस्ट में आपकी वही चीज पूछी जाएगी जो आपने लास्ट वीक में पढ़ी है, to ensure that you do MCQ practice also. So this entire idea, this entire gamut of what we have to study in prelims, we will be covering here. तो कंटेंट को लेके, किसी भी चीज को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Again, the question that should you read the standard books? Yes, you should read them once after you have seen the class. क्लास को कैसे प्लान करना है, डे को कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, we'll look at that. ठीक है, हम देखेंगे उस चीज को. बट
The idea is lectures will cover all of these books. Lectures के notes we will give you in advance. Like I told you, we do not believe in dictating things to you, because if we dictate things to you, you will be spending a lot of time hearing, writing, etc. हम आपको पहले से ही पीडीएफ दे देंगे जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हो। अब क्लास में नोट मेकिंग कैसे करनी है उस पर भी मैं आऊंगा, राइट? So you will have PDF notes delivered to you, you will have lectures delivered to you, जिसमें ये सब कवर होगा। क्लास में ही आप PYQs कर लोगे, and MCQ practice is going to happen on Sundays. Your job is just to follow this. You show up every day, you leave the rest to me. आगे चलते हैं, CSAT की बात करते हैं। CSAT में I have already told you, prelims का second part, CSAT के बारे में मैं आपको already बता चुका हूं कि we will need to take this seriously. CSAT पे we are going to have dedicated classes for 1 month. Just 1 second, यहीं लिख देते हैं। We are going to have dedicated classes on CSAT for at least 1 month. आप CSAT में अच्छे हैं नहीं हैं, right? Whatever your background would be, I would strongly recommend that you attend these classes. कि आप ये क्लास अटेंड कर लें, आपका CSAT फेल नहीं हो सकता। This is my guarantee. बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, सीसैट के लिए भी आइडियल अप्रोच ये है कि लास्ट 10 इयर्स के यूपीएससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें जो भी कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं मैथ्स के, लेट्स से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैज बीन आस्क्ड, लेट्स से प्रोबेबिलिटी हैज बीन आस्क्ड, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी कवर इन दीस डेडिकेटेड क्लासेस। तो इवन सीसैट इज सॉर्टेड, राइट? दिस आइडिया इज आल्सो डन। Using this course, how you are supposed to use the lectures and everything that we do here. For every subject, we will have lectures. They will cover more than 90% of the information needed. I am still very cognizantly not writing 100% here. If anybody claims 100%, they are lying to you. Nobody knows कि end में UPSC कहाँ से question बना दे. But to the best of our ability, of all the standard books, of all the reference books, you can see that nothing will be left here. At the end of each class and in the notes of each class, you will see the PYQs of prelims added. हर क्लास के हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे जिनमें प्रीलिम्स पीवाईक्यूज भी होंगे, राइट? फिर साइनॉप्टिक नोट्स कैसे बनाने हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे, आज ही करेंगे, जो आपके लिए होंगे सो दैट यू कैन रिवाइज क्विकली। वीकली टेस्ट ऑफ 25 MCQs ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन द वीक, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके बाद आपके कुछ डाउट्स भी बचेंगे। Every week or every 2 weeks, depending on which subject is going, depend करता है। शुरू में we will keep more of doubt resolution sessions, end में when you are gaining a larger understanding तो DRS का टाइम थोड़ा कम हो जाता है। Doubt resolution sessions, one you can ask live in the class, जैसे आप आज भी मैं आपसे आपके डाउट्स पूछूंगा, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, and we will have specific doubt resolution sessions. इसके बाद भी आपको हो सकता है कभी लगे कि यार my strategy is not aligned, I am not able to plan properly, I have some backlogs that have accumulated, I need some help with regards to my strategy. Here you will have mentorship sessions. This is the idea of what we have planned in the prelims for you. ठीक है, अब मेंस एग्जामिनेशन पे आते हैं, राइट? अभी तक प्रीलिम्स का आइडिया आपको क्लियर होगा। लेट्स कम टू द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में देयर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स. One of them would be English. English is compulsory. One of them would be your own language. Basically, you have to select one Indian language. For example, मैंने हिंदी select किया था। जिस भी language के आप Indian language के native speaker हैं, आप select कर ले। This is not a very difficult thing to get through. 300 marks का पेपर होता है, 75 marks आने होते हैं। फेल होने के लिए इस पेपर में जनरली मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप स्पेसिफिकली फेल होने के लिए मेहनत नहीं करोगे, आप पास हो जाओगे इन क्वालिफाइंग पेपर्स में। इवन टुडे इफ आई गिव यू दीस पेपर्स, यू विल पास। पॉइंट इज हियर, यहां बात करते हैं, ऑप्शनल की बात अलग से करेंगे, जीएस की बात करते हैं। GS1 contains history, geography and Indian society. GS2 polity and constitution, IR, social issues and governance. GS3 economy, agriculture, science and technology, environment, disaster management, internal security. GS4 ethics, integrity and aptitude, and 2 essays that we have to write. Let me talk of the main stream that we have here at Sarrthi IAS. पहली बात तो आप, if you compare this to any other foundation course in the market, this is something that is being ignored, right? Mains exam को generally ignore किया जाता है. Identify the subjects that are only asked in mains exam.
अब मैं आपको वो आंसर दे देता हूं कि मेंस में क्या क्या एक्स्ट्रा है. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो. इंडियन सोसाइटी इज अ मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट. ये एक एक्सक्लूसिव मेंस का सब्जेक्ट है. पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो. IR is a exclusive main subject, although IR is asked in prelims also as current affairs. But IR की weightage prelims में काफी कम है, mains में 50 marks की weightage है. There's a lot of weightage. Social issues asked exclusively in mains. Governance also asked exclusively in mains. ऐसा नहीं आप governance आप देखने जाओगे, एक आधा question 10 साल में prelims में आया हुआ है governance पे. But yes, major weightage is in mains. GS3 में बात करें तो एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली इट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, बट इन मेंस वेटेज इज मच हायर. इकोनॉमी इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, साइंस एंड टेक इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, एनवायरनमेंट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, डिजास्टर मैनेजमेंट वेटेज इज मच हायर एज इन मेंस, एग्रीकल्चर वेटेज इज मच हायर इन मेंस, इंटरनल सिक्योरिटी वेटेज इज मच हायर इन मेंस. GS4 ethics, integrity and aptitude, it is completely mains based paper. ऐसे तो कंप्लीटली मेंस बेस्ड है ही, राइट. तो अगर अब आप इसको देखोगे, यू विल रियलाइज दैट मेंस हैज मच मोर वेटेज एंड मच मोर थिंग्स नीड टू बी स्टडीड इन द मेंस एज कंपेयर टू प्रीलिम्स. सेकंड, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि व्हाई और व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, राइट. इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं. द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन. मेंस में लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन नहीं पूछा जाएगा. मेंस में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट योर ओन एनालिसिस. एक तो ये तरीका है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के कहूं कि सी दिस इज द क्वेश्चन एंड देयर आर 4 ऑप्शंस A B C D, जस्ट फाइंड द राइट वन. और एक तरीका है कि मैं आपको क्वेश्चन दूं एंड आई गिव यू 2 ब्लैंक पेजेस टू राइट एंड नाउ यू हैव टू राइट दिस सब्जेक्टिव आंसर इन 7 minutes. And you have to write this better than others also. मेंस में अच्छा करोगे तो ही इंटरव्यू में कॉल आएगा. So this becomes a much more difficult thing to crack. This becomes a much more difficult thing to crack and a lot more reading and analysis is required here. यहाँ अगर आपको facts आते हैं and you are basically conceptually clear, तो आप यहाँ पर you can go through this. But यहाँ पर तो आपकी style of writing, your style of expression, the way you actually structure your answers, all of that also counts. एंड आपके सामने एक ब्लैंक पेपर है. एवरीथिंग यू हैव टू जनरेट बाय योरसेल्फ. तो मच मोर एफर्ट एंड मच मोर ऑफ योर स्किल्स विल बी टेस्टेड एट दिस स्टेज. एंड इसीलिए वी हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन द मेंस एग्जामिनेशन. देखो हर जगह, क्योंकि प्रीलिम्स इज इजियर टू टीच, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज प्रीलिम्स डज नॉट रिक्वायर मी टू टीच यू हाउ टू एनालाइज. मेंस रिक्वायर्स मी टू टीच यू हाउ टू एनालाइज. सो लेट मी टेल यू ऑफ द मेंस टीम दैट वी हैव हियर. I will teach you GS3 in in completion, all of the subjects of GS3. I will teach you for mains. I have cleared this exam before. GS4 and essay will be taught to you by Mudit Jain sir. Mudit Jain sir has cleared this exam 3 times. Twice he had become IPS. Then he went to National Police Academy. There he got an injury. उनकी ankle twist, he got some ankle injury and he was removed from the IPS. He was told कि नहीं आप ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकते, you go back home, get fit, come back again, etc. तो वो प्रॉब्लम हो गई थी. Look at the indomitable spirit of that person. उन्होंने फिर से एग्जाम दिया, थर्ड टाइम एग्जाम देके तीसरी बार एग्जाम क्लियर किया, 173 रैंक लाई एंड देन ही वेंट इनटू इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स. तो उनकी 3 बार उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है विद रैंक्स 222, 209 and 173. That person is going to teach you GS4 and essay. GS2 is being taught in this course to you by Varun Jain sir. Varun Jain sir has appeared in the interview twice. He has given 6 attempts and he had highest all India marks in GS2 in 2019. And he was my teacher also. So जब मैं पढ़ रहा था 2022 में, he was the one who was teaching me and I can say with confidence कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता अगर यहाँ वरुण सर नहीं होते तो, राइट. GS1 के लिए we have Kaval sir and Pallavi ma'am. Both of these people have appeared in interviews of this examination. तो पहले तो इस पूरे सिस्टम में, although this is true for the entire course, उस बारे में भी बात करेंगे, you are only reading from people who are selected or who have appeared in the interview. अब
जैसे मैंने आपको कहा यहां कंटेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट ओनली द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का जो प्रोसेस है वो प्रीलिम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डाइवर्स है। सो लेट्स नोट डाउन द मेंस प्रोसेस फर्स्ट। मेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंटेंट, कंटेंट विद एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड वील आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट मेंस में जो कंटेंट लगता है दैट रिक्वायर्स अस टू रीड मच मोर। तो यहां पर कोई स्टैंडर्ड बुक या वो नहीं है, यहां पर बस ये एक हमारा आइडिया है दैट यस वी हैव रेड इट इन डिटेल एंड वी हैव कवर्ड इट कंप्लीटली, राइट। बट कंटेंट के आगे, कंटेंट पे गेम खत्म नहीं होती है मेंस में। द नेक्स्ट थिंग इज आंसर राइटिंग। क्यों आंसर राइटिंग इतना बड़ा कंपोनेंट है इस एग्जाम का? What is the main problem with answer writing in this exam? आपसे पूछता हूं मैं, क्या लगता है आपको मेन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को आंसर राइटिंग में? इट इज एक्चुअली टाइम। सारी प्रॉब्लम यहां टाइम की है। कैसे होता है मेंस का एग्जाम? आपको मेंस के एग्जाम के बारे में थोड़ा बताता हूं, फिर बताता हूं हम उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे। लेट्स से GS3 का पेपर ले लेते हैं, या GS1 के बारे में भी ट्रू है, 2 के बारे में भी, 3 के बारे में भी, 4 के बारे में भी। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ GS3। GS3 के पेपर में देयर आर 20 क्वेश्चंस। There are 10 questions of 10 marks each. There are 10 questions of 15 marks each. This would be 100 marks in total. This would be 250 marks in total. So 150 here and add करके 250 in total. ठीक है, ये जो 20 questions हैं ये आपको कितने टाइम में लिखने? You have to write this entire paper in 3 hours. अब मेंस की बुकलेट कैसे होती है? मेंस की बुकलेट में आपके पास एक्स्ट्रा शीट या एक्स्ट्रा टाइम मांगने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेंस का पेपर ऐसे होता है, यहां से पेपर स्टार्ट हुआ, यहां पर क्वेश्चन 1 लिखा है, क्वेश्चन 1 इज ऑफ 10 मार्क्स। आपके पास यहां पर ब्लैंक पेज है, सेकंड पेज ब्लैंक है, थर्ड पेज पे, दिस इज पेज नंबर लेट्स से 3, क्वेश्चन 2 लिखा है। तो अब आपको क्वेश्चन 1 इन्हीं 2 पेज में खत्म करना है। तो 10 मार्कर के लिए आपको यही 2 पेज मिले हैं। यू कांट गो ऑन टू द थर्ड पेज, यू कांट आस्क फॉर एक्स्ट्रा शीट, क्योंकि एक बुकलेट है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जगह ही नहीं है। इट इज जस्ट मेड लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चन 2, 3 ऐसे पहले 10 क्वेश्चंस लिखे, देन क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स देयर आर 15 मार्कर्स। तो क्वेश्चन 11 लेट्स से ये एक पेज पे क्वेश्चन 11 लिखा है, अगला पेज ब्लैंक है, उसके अगला पेज ब्लैंक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 12 लिखा है। तो एक 15 मार्कर के लिए आपको 3 पेजेस मींस 3 साइड्स, राइट। तो 1 पेज, नेक्स्ट पेज, उसके अगले पे क्वेश्चन लिखा है। तो आपको ये 3 साइड्स मिलेंगी पूरे करने के लिए, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 3 hours इज 180 मिनट्स। तो अगर मैं बिल्कुल आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं तो यहां पर आई विल हैव 7 मिनट्स पर क्वेश्चन और यहां पर आई विल हैव 11 मिनट्स पर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में, किस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इट टेक्स 1 मिनट। तो इफेक्टिवली दीज 2 पेजेस हैव टू बी रिटन in a 10 marker in 6 minutes, and these 3 pages have to be written in 10 minutes. अब इन 6 or 10 minutes में आपको क्या करना है? You not only have to write the answer, you have to write a relevant structured answer जिसमें सब headings हो, maybe flow chart या diagram की requirement है तो वो हो। Second thing that is required here is your answer should be better than others, तभी तो आप आगे जाओगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, वी हैव टू राइट बेटर आंसर देन अदर्स, राइट। तो पहले तो अगर हमें 6 मिनट्स में आंसर लिखना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? हमारा कंटेंट टॉप नॉच होना चाहिए, एंड आई विल शो यू दैट टुडे ओनली। व्हाई एम आई क्लेमिंग दैट आवर कंटेंट इज टॉप नॉच? आई विल शो यू दैट टुडे ओनली। पहले तो हमारा कंटेंट टॉप नॉच होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए, राइट। हमें स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए इसको। Then after this structuring, we will be able to write or complete this answer. फिर हमें टाइम में भी कंप्लीट करना है। So for means there are 3 things that are required. One is content, कि मेरा content इतना अच्छा हो कि मुझे वहां पर जाके सोचना ना पड़े। I should know what is there in my content already, and I should be absolutely clear with my concepts, so that the moment I see a question, I know what has to be written.
Then I need to know answer writing. In answer writing, I need to know how to structure the answer. If there are any templates of answer writing, ये मुझे पता होने चाहिए. And then there is the third component of time management. I still have to do it in a certain amount of time. I cannot spend more than 7 minutes in a 10 marker. I cannot spend more than 11 minutes in a 15 marker. So we have taken care of all three of these angles. हमने ये नहीं है कि आपको सिर्फ कंटेंट बना के छोड़ दिया. Most जगह अगर आप देखोगे content even is not taught in detail, but we have decided that all three of these things will be taken care of very very carefully. Content की अगर हम बात करें, so content में मैंने आपको बताया GS 1, 2, 3, 4 and essay. We are going to have dedicated classes, and people who are teaching you are people who have definitely cleared the means. या तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिया है या उन्होंने एग्जाम ही क्लियर किया है पूरा. दीज आर द पीपल हु आर टीचिंग यू दिस कंटेंट. फिर आंसर राइटिंग पे आते हैं. अब आंसर राइटिंग में वुडंट इट बी बेटर इफ वी हैड सम टेम्पलेट्स रेडी, राइट? अगर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स रेडी होते आंसर राइटिंग के, तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम एक बेटर आंसर लिख पाते? आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि इन टेम्पलेट से मेरा मतलब क्या है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड मिलेट्स, राइट? मिलेट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा. मिलेट्स आर अ टाइप ऑफ ग्रेन, राइट? चलो इससे इजी कर देते हैं. लेट्स मेक इट अ बिट इजियर देन दिस. बॉर्डर्स के बारे में तो हम सबको पता है, राइट? I'll ask you a question and मैं आपको कहूंगा कि आप उसका आंसर सोचना. I'll give you 1 minute. देखो अगर हमें एक 10 मार्कर क्वेश्चन ये लिख देते हैं. अगर हमें एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन 7 मिनट्स में लिखना है, तो हमें 2 पेजेस भरने हैं इन 7 मिनट्स. अब 2 पेजेस लिखने में ही just the writing time here is going to be 6 minutes. So what is going to be our thinking time per question? जिसमें हम सोच पाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर हम थिंक करके एक ये सोचेंगे कि अच्छा यार दिस इज हाउ आई प्लान माय आंसर इन 1 मिनट एंड इन 6 मिनट्स देन आई एम एक्चुअली गोइंग टू राइट. उसमें भी तो टाइम लगना है. तो बेसिकली 1 मिनट है मेरे पास टू थिंक अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, है ना? यही काम है. 1 मिनट लगेगा टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन. 1 मिनट ही है मेरे पास. तो ये प्रोसेस अभी करके देखते हैं. आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन एंड मिनट से नहीं देता. आई विल गिव यू समथिंग व्हिच इज very very easy for you to understand, also something that you also have read. आप मेरे साथ एक एक्चुअल मेंस का क्वेश्चन अभी लिखो. 2021 मेंस में एक क्वेश्चन आया. To what extent has gig economy? Gig economy is again these things like Zomato, Ola, Uber, Blinkit, जहां पर ये drivers and these people who are working in, you know, let's say urban company etc. To what extent has gig economy impacted women's empowerment in India? ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. वर्ड लिमिट मिली है हमें 150 वर्ड्स की. लेट्स फॉरगेट अबाउट द राइटिंग पार्ट. आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस आंसर. थिंक अबाउट दिस आंसर फॉर 1 मिनट. प्रोसेस समझ गए हो क्या करना है? आपको 1 मिनट का टाइम है. मैं आपकी चैट खोल देता हूं. आपको 1 मिनट में जो जो थॉट्स दिमाग में आए ये पढ़ के आप चैट में लिखो. अब 1 मिनट में ही हमें सोचना है. अब जो मैंने आपसे करवाया है ना, जो अभी आपने 1 मिनट में किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन एवरी मेंस पेपर 20 टाइम्स. 20 टाइम्स. बट ये द गुड थिंग इज वी डोंट हैव टू डू इट टुडे. वी हैव टू डू इट 1.5 years लेटर. ये काम मैं आपसे करवाऊंगा अगेन इन द मेंस प्रिपरेशन. 1.5 years later we need to be perfect at this to clear. अब मैं देख रहा हूं आप लोगों ने बहुत आंसर्स लिखे. What was this question actually asking? कि ये जो गिग इकोनॉमी आई है इंडिया में, ये जो नई ट्रेंड आया है कि ओला ड्राइवर्स, उबर ड्राइवर्स, यू नो, जॉब्स इन अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, इससे विमेन कितनी एम्पावर हुई है इंडिया में, यही पूछा है कि इससे विमेन की एम्पावरमेंट कैसे बढ़ी है, राइट? पहले बताओ, डिड यू फाइंड दिस प्रोसेस डिफिकल्ट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स आई सॉ दे वर समवॉट अनस्ट्रक्चर्ड. आपको जो पॉइंट दिमाग में आया आपने एकदम से ऐसे रैंडमली सोचा, जो पॉइंट दिमाग में आया आपने लिख दिया.
यही हुआ ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड. डिड यू फाइंड दिस प्रोसेस डिफिकल्ट 1 मिनट के टाइम में? दिस इज नॉट एन इजी थिंग टू डू. आसान काम तो नहीं है ये 1 मिनट में. यस और नो? दिस इज डिफिकल्ट राइट. जो यहां पर कह रहा है उनको डिफिकल्ट नहीं लगा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली यहां पर करना क्या है. It is not possible that you find this easy at this stage in your preparation, right? अब मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं एंड फिर ये काम दोबारा करते हैं. ठीक है, लेट अस, आई विल हेल्प यू अ लिटिल बिट एंड वी विल डू दिस एंटायर प्रोसेस अगेन. हेल्प मैं आपको क्या करता हूं, पहले तो एक क्वेश्चन देखो, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट डज इट से? टू व्हाट एक्सटेंट. ये आप सब लोगों ने इग्नोर किया. इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कहां तक विमेन्स एम्पावरमेंट को कहां तक इंपैक्ट किया है. जैसे मैं आपसे पूछूं, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इंडिया कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग एवरीवन टू विद अ गुड क्वालिटी, तो आप कहोगे यस वी हैव मेड सम प्रोग्रेस as far as increasing our literacy rate, schools are increasing, but yes lot of things are still left. यही बोलोगे ना. अगर मैं आपसे पूछूं to what extent India has achieved its military goals, तो आप कहोगे yes we have achieved a lot of goals, we have strong armed forces, strong air force, strong army, strong navy, but still there is a long way to go. We need to have better modernization, better development. To what extent have you completed your UPSC civil services preparation? So you will say very small extent, I have started, I am listening to this session carefully, but there is a long way to go. ये बात समझ आई? इन्होंने पूछा था, this was the exact question in the paper. To what extent, not how it is impacting. ये क्वेश्चन ये नहीं है how has gig economy impacted women's empowerment in India. It is to what extent. मतलब हमें एक certain, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, that yes there has been an impact, but still some things are left which gig economy has not impacted. पहले बताओ ये बात समझ आई? This is why I am saying answer writing skill is important. ये डिफरेंस समझ आया आपको? Were you now able to catch this? Second thing, अब मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसी क्वेश्चन में. Let me give you a definition of women's empowerment. मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को एक women's empowerment की डेफिनेशन दे देता हूं एंड उससे आपका इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यूनाइटेड नेशंस ने विमेन एम्पावरमेंट की एक डेफिनेशन बनाई, राइट? उन्होंने क्या कहा? विमेन्स एम्पावरमेंट इज डिफाइंड इन दीज 5 कंपोनेंट्स. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है दैट देयर नीड टू बी दीज 5 कंपोनेंट्स. 1, women should be able to impact the direction of social change. Second, women should have the right to make choices that control their own lives. Right to make choices that control their own lives. Then, women should feel a sense of self-worth. Third, women should have access to resources. Which resources? Social, economic, and political resources. Right? And lastly, women should have control over their own lives. यूएन ने विमेन एम्पावरमेंट को ऐसे क्लासिफाई किया. इसको याद करने के लिए एक निमोनिक भी बना लेते हैं. लेट्स कॉल इट DRSSC. डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, रिसोर्सेस, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सोशल चेंज एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स. राइट? डॉक्टर श्री शिविन चौधरी, सॉरी अबाउट दैट, बस याद करने का तरीका है. ठीक है, अब मान लो आपके सामने ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, दैट यूएन ने विमेन एम्पावरमेंट को ऐसे डिफाइन किया है. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन. अब मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूं यहां पे. टू व्हाट एक्सटेंट, ये क्वेश्चन मेंस 2021 में आया था. आई हैव गिवन दिस मेंस. टू व्हाट एक्सटेंट गिग इकोनॉमी हैज इंपैक्टेड विमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया. अब देखो आपके लिए कितना आसान है. आपको चेक करना है कि गिग इकोनॉमी में इनमें से कौन सी चीजें अचीव करवा दी. ये तो निमोनिक है, इसको हटा देते.
Which are the things that gig economy helped us achieve as far as women empowerment is concerned, and which are the things that we were not able to achieve, right? तो अब देखते हैं गिग इकोनॉमी, यहां से स्टार्ट करते हैं. गिग इकोनॉमी हैज गिवन women access to economic resources, better jobs, right? But has it given them social standing, little bit more social standing in the household? Okay, now women are also contributing to the family income. But political resources are political participation, voting, voices being heard. ये चीज तो गिग इकोनॉमी ने नहीं करी. So this it has not done. These two it has done. Control over their own lives. Yes, since they are now earning and they have gotten opportunities. Urban Clap pe they have gotten opportunities to work. Some are also working in Zomato as delivery women. So they are getting more control over their own lives, but not completely. Has it increased their sense of self-worth? Yes, because they have been given jobs, etc. And more opportunities for employment are there, flexible working hours are there. But no also. क्यों? क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स की जॉब्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट जॉब्स. कभी भी आपको निकाला जा सकता है, राइट? आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडिंग थोड़ी है. आप ओला में एम्प्लॉय की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं हो, आप बस एक वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज हो, एक कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज हो. Right to make choices, has this really increased because of gig economy? Yes, it has increased in the household. When women work, they contribute in the household, they have more standing. They will be able to talk about the choices they make, especially reproductive choices, right? When they are asked by their families, when pressure is put on them that you need to have children, it gives them more right to make choices with regards to their own bodies. If they have some economic opportunities also, it gives them more standing in their families, right? Although this is slightly unfortunate in the sense that ideally all women should have the complete right to make every single decision that they have to about their own bodies, but that is unfortunately not the reality we live in, right? So yes, this has happened, but right to make choices in the workplace is not there, because working hours are difficult, sometimes they are removed, proper compensation is not given, insurance is not given. Direction of social change, have they been able to impact social change? Yes, because many organizations have been made with regards to such workers who are coming together protecting the rights of women, but no, also long way is there to go. abhi sari baat complete nahi ho pai hai. Now is this answer looking much better? Just because I have not taught you anything, I have just told you a template कि women's empowerment की ये definition है. आज के बाद मेंस में हमें कोई भी क्वेश्चन दिख जाए जिसमें women's empowerment लिखा है, we will just use these 5 things. We will use these 5 things and we'll answer. And अब हमारा आंसर, अब देखो इन 2 pages में इसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम. We would start our answer on the first page by first drawing this flow chart that as per United Nations, women empowerment has 5 components. Gig economy has led to women empowerment in India. एक ऐसी सब हेडिंग बनाते हैं, यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखते, मे बी 5 पॉइंट्स, फिर लिखते गिग इकोनॉमी स्टिल हैज लेफ्ट समथिंग टू बी डिजायर्ड. इट हैज नॉट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ women empowerment. अब मैंने एक्सटेंट बता दिया that yes, it has led to women empowerment, but no, it has not led to complete women's empowerment. Some things are still left. और फिर मैं कंक्लूजन में लिखता that further more steps are needed. One good step is women's reservation in parliament, नारी शक्ति अधिनियम एक्ट ऑफ 2023. अब देखो ये कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, और मैंने आपको क्या किया, I have taught you hardly for 10 minutes, but do you feel that now you are much more confident as far as writing this answer is concerned? This is the power of templates in mains exam. ये पावर है टेम्पलेट्स की. This is what we are going to do as far as mains is concerned. समझ आया ये क्या किया गया है यहाँ पे? And this exclusively I am going to teach you. मेरा काम है आपको ये पढ़ाना. तो as far as the mains is concerned, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कंटेंट में हमें 2 चीजें चाहिए. आंसर राइट कंटेंट में हमने पढ़ लिया, आंसर राइटिंग में हमें 2 चीजें चाहिए, स्ट्रक्चर एंड टेम्पलेट्स. दिस इज व्हाट वी टीच यू थ्रू राइट स्मार्ट. राइट स्मार्ट इज part of this course. Write Smart is the course that I will be taking. We will be writing, जैसे ये एक previous year question हमने अभी लिखा, ऐसे हम more than 400 previous year question साथ में लिखेंगे. After you have studied your content, जब आपका content हो जाएगा, we will write such 400 questions together. जैसे हमने एक अभी किया, ऐसे हम 400 times ये exercise repeat करेंगे. मैं ही आपके साथ करूंगा.
उसके बाद तो यू विल बी कॉन्फिडेंट ना कि आपको स्ट्रक्चर भी आ गया और टेम्पलेट्स भी आ गए, अब आपको कॉन्फिडेंट फील होने लग जाएगा, राइट? देन लेट मी कम टू टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए वी हैव मेड एन इनोवेशन कॉल्ड लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. अब देखो, जनरली मेंस के लिए लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज कर लो. मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अगर आपको मैं टेस्ट देके छोड़ दूंगा तो कितने लोग टेस्ट लिखेंगे, है ना? कितने लोग उस पर मेहनत करेंगे? कई लोग लिखेंगे, एक दो टेस्ट लिखोगे फिर भूल जाओगे. तो हमने कहा नहीं, वी विल एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी हियर ऑल्सो. तो लाइव आंसर राइटिंग सेशंस में हम क्या करते हैं, दीज आर टेकन बाय वरुण जैन सर. मैंने खुद ये लाइव आंसर राइटिंग सेशंस यूज किए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम. यहां पर होता क्या है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, इट इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. राइट स्मार्ट में तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं टू लर्न स्ट्रक्चरिंग एंड टेम्पलेट्स. यहां पर क्या करेंगे, वी मेक न्यू क्वेश्चंस फॉर यू. वी मेक अ न्यू क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड. आपको कहते हैं 7 मिनट्स में लिखना है. 7 मिनट्स का टाइमर चला देते हैं और वरुण सर ऐसे ही यहां खड़े रहते हैं और कहते हैं लिखो. ही विल गिव यू सम हिंट्स कि अच्छा यार इसमें देखो इंट्रोडक्शन में ये लिखा जा सकता है, इसमें बॉडी में ये लिखा जा सकता है, कंक्लूजन में ये लिखा जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आप लिखते हो. शुरू में आपसे सिर्फ 50 वर्ड्स लिखे जाएंगे, 20 वर्ड्स लिखे जाएंगे, बट थ्रू रिगरस प्रोसेस ऑफ लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विल गेट टू अ पॉइंट कि आप पहले स्ट्रक्चरिंग और टेम्पलेट्स भी सीख जाओ और फिर आप एक टाइमर के साथ लिखना भी सीख जाओ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाए. More than 30 sessions of Write Smart, more than 30 sessions of laws are included in this course. तो जब मैंने आपको पहली बार ये कोर्स लॉन्च करने के टाइम पे कहा था इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, आई मेंट इट. एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो गई, प्रीलिम्स का कंटेंट हो गया, मेंस का कंटेंट हो गया, आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चरिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न्ड. नथिंग थ्रू आउट द एंटायर सप्लाई चेन इज लेफ्ट. राइट, 30 प्लस सेशंस यहां हैं, 30 प्लस सेशंस यहां हैं. So we are going to ensure that आपको ये प्रॉब्लम ना आए. This is the idea here. ये बात समझ आई? Is this thing clear? All right. आगे चलते हैं. मेंस हमने डिस्कस कर लिया है. मेंस में नॉर्मली लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, that they read average content, unconsolidated notes and jump to test series. We will have advanced and analytical content with crisp consolidated notes ताकि आपका content sort हो. मेंस के PYQ हम राइट स्मार्ट से करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस करेंगे, इवन टेस्ट प्रैक्टिस वी विल डू. टेस्ट में आपके आंसर्स चेक भी होंगे. हाउ दैट प्रोसेस हैपेंस, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. राइट, तो ये पूरी चीज हम करने वाले हैं. अब सभी कहेंगे कि उनका कंटेंट एडवांस्ड और एनालिटिकल है. एवरीबॉडी विल से दैट वी हैव गुड एनालिटिकल कंटेंट, एडवांस्ड कंटेंट. तो उसका आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द वीडियो फॉर 1 minute सो दैट आई कैन लोड इट. 30 seconds के लिए आई विल जस्ट टर्न ऑफ द वीडियो. आई वांट टू लोड एंड शो यू समथिंग अप फ्रॉम आवर कंटेंट. एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको. देखो, दिस इज व्हाई वी कीप स्ट्रेसिंग दैट वी हैव अ गुड टीम हियर एंड वी वर्क वेरी हार्ड. हमें एक्चुअली सबको यहाँ पे पढ़ना बहुत पसंद है. वी आर अ टीम ऑफ नर्ड्स, नथिंग एल्स. ठीक है, हम सारे नर्ड. दिस इज क्वेश्चन 10 ऑफ ये सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 जो अभी जो एग्जाम चल रहा है, जिस एग्जाम के अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, 2024 सितंबर में, अगस्त सितंबर में इनका मेंस था, उसके क्वेश्चंस हैं ये. राइट, मैंने इस टाइम पे भी मेंस के लिए कंटेंट पढ़ाया. ये GS3 के क्वेश्चंस हैं एंड आई टॉट GS3 टू पीपल हु वर गिविंग मेंस दिस ईयर. तो आपको कुछ दिखाता हूं. ऑब्वियसली 2024 का एग्जाम था, सो द एग्जाम वाज इन सितंबर, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ था इस बार, एंड आई वाज टीचिंग दिस इन जून एंड जुलाई. जून जुलाई में आई वाज टीचिंग GS3 फॉर दिस एग्जाम. आपको कुछ चीजें दिखाता हूं. ये क्वेश्चन आया इस बार मेंस में. डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. इस साल के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है. ये मेरे इस साल के नोट्स हैं. कैन यू रीड दिस? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एग्जैक्टली फ्रॉम द नोट्स. ये क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ द एक्ट, जो हमें लिखना है लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस ओवरसाइट, फुल फॉर्म, वो कंक्लूजन ऑफ द एक्ट. एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड. आगे देखते हैं. सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आया. सोशल मीडिया इज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज. तो कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं टू सॉल्व द सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम सोशल मीडिया. ये क्वेश्चन आया इस साल के मेंस में. सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. Internal security threats posed by social media, various levels of threats.
कहां कहां पे ये थ्रेट्स आते हैं, रेडिकलाइजेशन एक्सेट्रा, एंड इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन इन इंडिया। एग्जैक्ट आंसर आगे पूछा था उस क्वेश्चन में कि और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट अदर स्टेप्स कैन बी टेकन, वे फॉरवर्ड टू काउंटर रेडिकलाइजेशन थ्रू सोशल मीडिया, एंड हियर इज द कंप्लीट आंसर। मिलेट्स में आपसे क्यों पूछ रहा था, व्हाई वाज आई आस्किंग अबाउट मिलेट्स, बिकॉज मुझे लगा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। दिस केम इन 2024, एक्सप्लेन रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। मेंस का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। लेट मी शो यू माय नोट्स। मिलेट्स, इनके बारे में, इंडिया में कहां कहां आते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, constraints of millets cultivation in India, and way forward, initiatives taken, way forward for millets. Exact question from the notes. What are major challenges faced by Indian irrigation system in recent time? Suggest measures taken by government for efficient irrigation management. अब हमारा कंटेंट देख लेते हैं। Challenges in water management. These are based on 2 government reports, दलवाई पैनल ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। क्या क्या चैलेंजेस थे, सप्लाई साइड पे क्या चैलेंजेस थे, डिमांड साइड पे क्या क्या चैलेंजेस थे, वाटर गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, एंड व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स रिगार्डिंग वाटर। कुछ केस स्टडीज जो हम ऐड कर सकते थे इन आंसर में, इनमें से कोई एक आपको याद करनी थी फॉर राइटिंग दिस आंसर। आगे चलते हैं। What is disaster resilience? डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, हमने देखा यह सब्जेक्ट आता है मींस में। How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention global targets of Sendai framework of disaster risk reduction. 15 marker question, question number 17 of last year GS3 पेपर। ये देखो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यही पूछा था पेपर में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सेंडाई फ्रेमवर्क से कैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लिंक्ड है, ये चीज यहां पर पूरी दी हुई है। एंड ह्योगो फ्रेमवर्क पहले कैसे आया था, सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले ह्योगो फ्रेमवर्क था। व्हाई डिड वी नीड अ सेंडाई फ्रेमवर्क एंड प्रायोरिटीज ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, कंप्लीटली गिवन हियर। ये देखो, What are causes of persistently high food inflation in India? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। Comment on the effectiveness of monetary policy of RBI to control this type of inflation. ठीक है, ये नोट्स हैं। फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ओवरव्यू, रीजंस, स्पेसिफिक फैक्टर्स, measures required to control food inflation. So I can say with confidence that the content you are getting here, the content you are getting here is what you need. आप ये content कर लो, इसके आगे मत भागो। यही अगर आप कवर कर लेते हो, it is going to be more than sufficient for you to make it. So again I am telling you, throughout this course we have always said this is a one stop solution. This is our idea, because prelims के लिए जो भी बेस्ट अप्रोच है वो हमने यहाँ कवर कर दी, मेंस के लिए जो भी बेस्ट अप्रोच है हमने यहाँ कवर कर दी, एंड कंटेंट जो आपको दे रहे हैं वो टॉप नॉच कंटेंट है, राइट? सो इज द आइडिया नाउ गेटिंग क्लियर इन योर हेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? I hope you guys are now feeling confident and you are aware of what we are going to have going forward. Now, बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में क्या चाहिए। हमने अभी प्रीलिम्स मेंस की बात की है, लेट्स टॉक ऑफ नाउ व्हाट इज नीडेड एट द इंटरव्यू स्टेज। In the interview stage, it is fairly important. First, you recognize that you will be speaking to somebody who has spent more years in the civil service than you have spent on this earth. When I was giving the interview, my chairman of the board who was taking my interview was Lieutenant General Raj Shukla sir. Right? Sir ने मेरे से काफी detailed questions पूछे about Chinese geopolitics, about India's stand with China. He asked me about my background, about medicine, questions about I'm from Haryana, so the state of Haryana, about खाप पंचायत etc etc. काफी डिटेल में डिस्कशन हुई। तो वहां पर एक तो हमें we need to know how to analyze issues, हमारे पास back end knowledge अच्छी होनी चाहिए, and we need to have confidence to speak in front of seniors. To have that confidence to speak in front of seniors, we need to have that confidence in ourselves today. एकदम से तो आ नहीं जाएगा. It will take time for us to develop that confidence. So the time needed to develop that confidence, it cannot be developed in one day. And this is why we solve this through mentorship sessions. You will have group mentorship sessions also.
There is also an option, some of you might have opted for one-to-one mentorship. मैं आपसे request करूंगा, whenever you talk to your mentor, either in a group or one-to-one, always keep your camera on, always communicate formally. Let us develop this aspect. देखो जो knowledge का aspect है वो तो we learn over time. We learn the knowledge aspect over time, but this aspect of you communicating properly, of you being able to speak confidently in front of someone who is senior, starts today. So this is the thing that we need to keep in mind, that as far as personality test is considered, एक तो यूपीएससी इंटरव्यू टर्म यूज नहीं करता है, यूपीएससी टर्म यूज करता है पर्सनालिटी टेस्ट. दे आर टेस्टिंग आवर पर्सनालिटी. So that component needs to be developed from today. It cannot be developed in last 1 month, last 2 months. So from today, whenever you speak to a mentor over Zoom call, आपके मेरे साथ भी ऐसे sessions होंगे, always keep your camera on and communicate as formally as you can. Maybe you will make some mistakes. Maybe in speaking English, all of us, because English is not our first language, we make some issues, we make some mistakes. जैसे मैंने अभी ये issues बोल दिया mistakes की जगह, right? Sometimes we make some grammatical errors. Sometimes we don't feel confident. But over time, we will develop this ability. This is the most important ability that we have to start from day one. So as far as prelims, mains and interview is concerned, you don't need to go anywhere else. We are going to solve this problem end to end for you. The only thing you need to do is A, trust in the process. Trust this process. It has been designed with a lot of effort. B, show up every day. Right? ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, हाँ कर लेंगे बाद में देख लेंगे. If you lag behind, if you take a casual approach, then you will lag behind even later. Backlogs are not something that I want that you guys accumulate. And lastly, show consistency and commitment. Over the next 1.5 years, this exam needs to be the most important thing in your life. Okay. One last very important thing I want to say to you, then we'll go to note making, etc., which is what you can expect from this course. Right? See, our responsibility does not end with giving you good content. It starts with it. My job here, or our team's job here, is to make you a good student. And a good student, in my opinion, is someone who can read an issue and analyze it themselves, knows how to express that issue when asked to express in writing, knows how to express that issue when asked to express while speaking, and if asked objective questions, prelims की बात कर रहा हूँ, if asked objective questions, they can answer it, right? We want to hedge you against misguidance. यहाँ पर इस एग्जाम में बहुत एक कल्चर है, भैया कल्चर. You must have heard this. That library में कुछ भैया ने कुछ बोल दिया, यहाँ से पढ़ लो, right? किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसे कर लो, मैंने एग्जाम दिया था, मेरे को ये पता है, etc., etc. We want to hedge you against misguidance. The team here at Sarrthi IAS who is going to be talking to you, we have a combined experience of 4 selections and 14 interviews. So you know you are talking to credible people. Nobody who has at least not appeared in the interview will talk to you. Anyone who talks to you throughout this course will have at least appeared in the interview of this exam. नहीं तो वो आपसे कोई बात करेंगे ही. बैकएंड में हो सकता है वो कुछ काम हमारे लिए कर रहे हो, आपसे कोई बात, या आपसे जो फाइनल कम्युनिकेशन है, any sort of content communication, anything that has to happen is going to happen with at least someone who has appeared in the interview or someone who is selected. This is what we have planned for you over the next 1.5 years. So you need not go anywhere else. अब एक broad plan भी देख लेते हैं. Let's look at a broad plan. I'll come to one-to-one mentorship after that. Let's look at a broad plan for the next 1.5 years. पहले आपको बताता हूं कि हमारे प्लान को लेके आइडिया क्या है. The idea is that first we need to build our foundation. First we need to build our foundation. So the exact basic things of this exam, the 4 basic subjects of this exam we have to cover first. What are those 4 basic things? History, geography, polity, and economy. These are the 4 foundational basic subjects of this exam. First, we will cover this. Here, we will cover prelims and mains together.
to lay the base for and lay the groundwork for whatever we have to study further. This is the first phase or the foundation phase. Then we move on to the second phase. Second phase यहाँ पर क्या है? The second phase is the mains phase. First, we will read in detail for mains. Why? Mains is a much bigger exam, much tougher exam. We have built our foundation, then we'll read for mains. So then we'll have a mains phase. Mains के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे in this second phase. Here we will be covering GS 1, 2, 3, 4 and essay. And this is the time when ideally you should be covering your optional alongside. इसलिए ऑप्शनल की आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Optional we anyway have to study after this phase is done, although I will talk about optional in detail. And lastly, once this is done, by the time this is done, we will have moved on into 2026. So 2026 would have started. इस time पे we will now focus on prelims specifically. So what we will do, we will study and we will revise the foundation subjects. And we will study the other subjects such as science and technology, environment, IR, etc. for prelims. We will give prelims tests at this time. ये होगा. इस टाइम पे 2026 में फिर May 2026 is when you will have your prelims exam. Once this is done, after your prelims, आपका prelims हो या ना हो, we will give you access to everything. Although it is my sincere hope that all of you in this class make it through the prelims and give the mains, but even if you don't, 1% chance, we can say some bad scenario in case we don't make it through the prelims, even then we will have access to everything, so don't need to worry there. Then again for the mains examination, we will now do practice. So we will do those things, live answer writing, tests for mains exam. This is the broad plan we are going to follow. पहले foundation build करी, फिर मेंस का कंटेंट डिटेल में पढ़ा, फिर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया एंड प्रीलिम्स का जो बचा हुआ कंटेंट था उसको पढ़ा, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करी, टेस्ट करे, प्रीलिम्स दिया. प्रीलिम्स देने के बाद फिर मेंस पढ़ चुके हैं पहले, कंटेंट आई हैव ऑलरेडी रेड, फिर मेंस की प्रैक्टिस करी, मेंस के टेस्ट दिए, फिर मेंस दिया. दिस इज द आइडिया. नाउ विद दिस आइडिया, these are the subjects that we will be studying. So you will be starting with polity first, then we'll do geography, then economy and modern history. Economy I will be teaching you in the month of July. Polity, geography, economy and modern history, 4 foundation subjects we'll be doing first. Then from September onwards, we will be focusing on mains. This is our mains foundation phase. So here you will see the subjects of GS 1, 2, 3, 4. This is what we will be doing at this time. Essay also we will be covering here. So ये mains का time हम यहाँ पर cover करने वाले हैं. One additional thing, like I promised, in the month of December, we are going to have specific classes for CSAT. CSAT के लिए specific classes रखेंगे so that we don't miss out on CSAT later. यहाँ पर Write Smart भी करेंगे हम, where we will learn these templates. We will have live answer writing sessions here also. Then January onwards. Now we have come to January 2026. Now we have to get back to our prelims phase. So we'll be focusing on ancient medieval history and art and culture, science and technology and environment. Along with that, whatever current affairs we have read throughout the year, अब 2025 के पूरे current affairs हमें करने, तो यहाँ पर current affairs will also be covered. Class यहाँ हो रही है, it will cover all the current affairs that you need. और current affairs आपको कौन पढ़ाएगा? Again, Mudit Jain sir, the person who has cleared this exam 3 times. He will be teaching you current affairs. So even this thing is sorted. यहाँ पर we have introduced one new innovation which is live MCQ solving. जैसे live answer writing sessions में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ question आएगा, timer चलेगा and you will write the answer. ऐसे ही prelims से पहले, इस time पे आपका prelims होना है. This is when you have to give your prelims. So before this, we will have live MCQ sessions with you. यहाँ पर MCQs हैं. There will be a set of 25 MCQs. You are at your home trying to solve the MCQ. Varun sir is standing in front of you. 1 minute का timer है. You will solve 25 MCQs. Then he'll tell you how you were supposed to think. What was the idea here? ये हम करेंगे. तो MCQ की भी practice हो गई. फिर prelims के बाद again we'll be doing live answer writing sessions. Once again we are going to do live answer writing sessions.
and focus on mains practice. So prelims is here, mains is here. यहाँ पर आपका mains होगा. So is broadly the plan clear to you? This is the broad plan, and this is month-wise, subject-wise plan. So nothing is left as far as GS is concerned. CSAT, current affairs, everything is covered here. ये बात आपको समझ आई? What are the 3 phases and how we are going to plan this? All right. Now this is our broad plan for next 1.5 years. Let us now understand daily basis पे हमारा क्या plan है. We will have classes in this course. अभी first week is of orientation. After this orientation week, we will have classes at 4:30 p.m. Right? 4:30 p.m. so that people who are attending college, they can also watch this class live. What is your job? What is your ideal day? Right? मैं आपको आपका ideal day describe कर देता हूँ. Monday to Saturday हमारी class होगी. Saturday, most of the times on Saturday, we will have doubt resolution session. अब मे बी फर्स्ट वीक में आपका डाउट रेजोल्यूशन सेशन ना हो बिकॉज अभी उतने कवर ही नहीं हुआ है दैट यू हैव डाउट्स, बट फ्रॉम द सेकंड वीक यू विल हैव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस ऑन सैटरडे. नाउ व्हाट इज योर आइडियल डे? प्लीज नोट दिस डाउन आल्सो. हाउ डू आई वांट यू टू स्पेंड योर डे? आपकी क्लास है फ्रॉम 4:30 PM टू अराउंड 7:30 मान लो. 3 hours, generally less than 3 hours it gets over, but 3 hours is what we assume. So 3 hours you will watch the class here. I will recommend that if you can, now if you are occupied somewhere etc, तो आप recording देख सकते हो. Recordings are available for you to watch as many number of times as you want, so no fear there. But I would recommend that you come and watch this live. The moment this gets over, जैसे आपकी क्लास खत्म हुई, take a short break. Don't take a very long break. Take a short break and give yourself time from 8 p.m. to 10 p.m. In this 8 p.m. to 10 p.m., revise what was taught here. And read that same thing from a standard book. When you read from standard book, you will also see that nothing has been missed, and this will help reinforce your learning. It will help you read again and reinforce everything that you have understood. Okay? So revise and read the standard book. This is your job here. Now next day in the morning, let's say you are waking up at 7 a.m. or थोड़ा realistic कर लेते हैं 8 a.m. If you are waking up at 8 a.m., then your job at 8 a.m. is to actively recall whatever you read. This is what I'm asking from you daily. 10 p.m. के बाद आप सो जाओगे, सुबह उठ के even if let's say you are going to college etc, 8 a.m. उठ के immediately after waking up do active recall. Now what is active recall? Notes पे भी आएंगे इसके बाद. What is active recall or how you are supposed to treat active recall throughout this course? मैं आपसे पूछता हूँ या मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ. Tell me the 5 components of women's empowerment. You can't recall, that's okay. This is the difference between what we think revision is and what is actual revision. देखो, the way your brain functions, the ideal way to revise is not to reread. अब हम क्या करते हैं अपनी रिविजन में, वो मैं आपको बताता हूँ. मैं खोल देता हूं अभी आपके सामने वो 5 कंपोनेंट्स. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हमने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं. हमारा क्या तरीका होता है रिवाइज करने का? नोट्स को दोबारा पढ़ लिया, री रीडिंग द नोट्स, हाईलाइटिंग द नोट्स. इसमें याद नहीं होता. अब लिखा है सामने, आपके सामने पहले भी लिखा था, आपने तब भी सुना होगा, आपको याद नहीं रहा ना? नहीं रहता. आवर ब्रेन डज नॉट रिमेंबर लाइक दिस. आवर ब्रेन रिमेंबर्स बाय मेकिंग मिस्टेक्स. आपको इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं, व्हाई दिस वर्क्स, व्हाई दिस इज अ मच बेटर वे. तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको अपने नोट्स री रीड नहीं करने हैं रिकॉल करने के टाइम पे कि दोबारा से आप अपने नोट्स उठा के दोबारा से पढ़ रहे हैं. नो, यू क्लोज द बुक. जैसे मैंने अभी आपको ये दिखा के नहीं पूछा वुमेन्स एम्पावरमेंट के 5 कंपोनेंट्स क्या हैं. I asked you, close the book. I opened a new slide and say, tell me what are the 5 components. Some of you were able to recall, some you were able to recall 2, somebody was able to recall 1. That's okay. मैंने यहाँ DRSSC लिखा था, that was easy to remember, तो वो सबको याद रह गया. But actual components भूल गए.
नाउ दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिवाइज. आपने क्लास अटेंड करी, यू अटेंडेड द लेक्चर. द नेक्स्ट मॉर्निंग, without opening the book, without opening your notes, think what you had read the last day. Think what you had read yesterday. When you think of what you had read yesterday, then look at those, think, you try and recall those things. जैसे यहाँ पर आप women's empowerment के 5 components recall कर रहे थे. Someone said self growth. कोई बात नहीं, क्या हो गया, गलती हो गई, याद नहीं आया, that's okay. Make mistakes. Make as many mistakes as you want. Your brain will learn more. हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हमें गलतियां नहीं करनी है. कोई डांट देगा, if we make a mistake then what? We have to make mistakes. I am deliberately telling you make mistakes and remember through mistakes. अब जब मैं आपको दिखाऊंगा, अब आपको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे. किसी ने सेल्फ ग्रोथ कहा था, सेल्फ ग्रोथ नहीं है, सेल्फ वर्थ है. मिस्टेक होगी तो क्या हो गया, अब कर लेते हैं याद. तो आई विल फर्स्ट आस्क माई ब्रेन टू रिकॉल विदाउट लुकिंग कि यार 5 कंपोनेंट्स क्या थे. Then I will recall, okay, it was direction of social change. It was right to make choices. It was sense of self-worth. It was social, economic, and political resources. It was control of own lives. Now you will never forget. Right? जैसे यहां पर मैं चैट देख पा रहा हूं, मुनीषा ने लिखा है right to decide. Right to decide makes sense, but it is right to make choices. हम definition लिख रहे हैं तो हम exact words लिखेंगे. So now Manisha will never forget that it was right to make choices. She was thinking right. It is actually right to decide. Decision is making choices. But actual words क्या है? Right to make choices. तो आंसर में लिखना है तो right to make choices is a better word. Right? ये चीज हमें inculcate करनी है, ingrain करनी है. And this is how we have to learn. आपको एक बहुत interesting story बताता हूँ. क्यों मिस्टेक्स करके हम ज्यादा याद करते हैं. आपने भी लाइफ में बहुत पेपर दिए होंगे, राइट, एग्जाम्स दिए होंगे. When we make some very simple mistake, we don't forget it. ऐसा होता है ना कि mistakes we generally don't forget. Other things we can still forget. Mistakes we generally don't forget. Why does that happen? Why is it that we can't forget our mistakes? It is because our brain is evolutionary wired to not forget our mistakes. When we were hunter-gatherers, for most of the human history, humans have lived in forests. ये civilization तो बहुत recent चीज है. Right, for 10,000 years, for more than that, we have lived in forests. Forest में when we were traveling and we used to make a mistake. Mistake क्या है forest में? कि आपने एक ऐसी जगह पैर रख दिया जहां पे बहुत ज्यादा आवाज हो गई. You kept your foot on a twig, it created a lot of noise and the animal you were going to hunt heard that noise and ran away. तो आपको वो mistake याद रहती थी. Next time when you are walking, you'll be very careful that I have to hunt, so let me not make a mistake. Your brain is evolutionarily wired to ensure that you don't repeat your mistakes. Therefore, I want कि आप mistakes के through learn करो. This is a tougher process. मैं आपको अभी कहता कि एक बार जरा रिवाइज करना women's empowerment के कंपोनेंट, तो सबको मजा आ जाता, सब हाईलाइट करते, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते. Highlighting, making short notes and rereading are the worst ways to learn. Worst. इस पे साइकोलॉजिकल रिसर्च हो चुकी है बकायदा. ये सबसे खराब तरीके हैं लर्न करने के. The best way to learn is active recall. अब आपको भी लग रहा होगा कि नाउ व्हेन यू हैव सीन दोस कंपोनेंट्स अगेन, नाउ यू विल नॉट फॉरगेट देम. दिमाग लगाना, स्ट्रेन लगाना, ब्रेन पे जोर लगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो दिस इज व्हाट योर आइडियल डे इज एंड हाउ एक्टिव रिकॉल इज टू बी डन. इज दिस थिंग नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ, सो दिस इज आवर आइडियल डे. मैंने आपको बता दिया 4:30 to 7:30 आप क्लास अटेंड करो. क्लास के 2 घंटे बाद आप उसको रिवाइज करो एंड अगले दिन सुबह उठ के just for 1 hour you do active recall and this will sort you out throughout. संडे को आप टेस्ट दो, आपकी टेस्टिंग भी वहां पर हो जाएगी. संडे को we are going to have weekly test of 25 MCQs. इस वीकली टेस्ट को सुबह आधा घंटा देने के बाद आप फ्री हो संडे को from my side to take a break, अगर आपने पूरे वीक सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो. If you have done good work throughout the week, you can take a break on Sunday. Breaks are now in the next 1.5 years in your life. Breaks are something you will have to earn. You will have to earn your break. ठीक है, आपको फ्री में ब्रेक नहीं मिलेगा. अगर आपने मेहनत की है throughout the week, you've had a good week, fine, take a break. अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हाउ को डिस्कस नहीं करेंगे अभी. इसके लिए we'll have a separate session. When को डिस्कस करेंगे. मेरी सिंसियर एडवाइस है to all of you that let's wait for 2 months before we select our optional subject. Why am I saying this?
ऑप्शनल की पढ़ाई जनरली टेक्स 5 to 6 months. Even if we start our optional studies in the month of June, we will be fine. ठीक है, 3 hours per day for 6 months is what the optional takes. There is a lot of news that optional might be removed by UPSC. ऐसी काफी न्यूज है, तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं. That is one reason why I am asking you to wait. Secondly, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे हम शुरू में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल. ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल. इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इज ऑल्सो एन ऑप्शनल. राइट? तो पहले आप थोड़े से बाकी सब्जेक्ट्स जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लीजिए. Once you read some of the compulsory subjects, even you will understand what you are interested in. And then it would be better to get to an optional subject. Right? So I would say let's wait for 2 months. I will have a session again in detail about optional. If it is not, most likely it will not be removed. 99% it will not be removed. But still there are rumors about it. And you also must have heard these rumors. Right? I don't know what is happening. Nobody knows inside process क्या है यूपीएससी का. तो लेट्स वेट फॉर 2 months. 2 months वेट कर लेते हैं ऑप्शनल सिलेक्ट करने में. अभी नहीं सिलेक्ट करते. वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर ऑप्शनल इन द मंथ ऑफ जुलाई. द मंथ ऑफ जून, दिस इज द मंथ वी विल स्पेंड ट्राइंग टू डिसाइड द ऑप्शनल. You will take one very important decision in your life, which is who you want to marry. That will be the most important decision of your life. In your preparation, this will be the most important decision. कि आप ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट करते हो. So let's not take this decision lightly. That is why I am saying the entire month of June is to decide and take time in deciding this optional. इसकी एक पूरी प्रोसेस है. I will talk to you again about this in June. पूरी बात करेंगे about which optional to select in June. जून तक वेट कर लेते हैं, मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी. राइट? एंड क्लैरिटी इन द सेंस वी विल नो इफ ऑप्शनल इज बीइंग रिमूव्ड और नॉट. अगर जून तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया तो 99.9% इट विल नॉट बी रिमूव्ड नेक्स्ट ईयर. ठीक? अब these are phases of optional preparation, but we'll talk about this when we come to the optional. Now, like I told you, these are all the things that we are going to deliver to you, but we also have expectations from you. Right? See, regardless of whatever financial relationship is between the two of us, उसको आप साइड रखते हैं. Right? I want this to be a proper relationship where I fulfill my commitments to you and you fulfill your commitments to me. You are now aspiring to enter the professional world. Right? Professional world में, I don't mean professional in a bad way. I mean it in a good way. Let me professionally, to the best of my ability, fulfill all my commitments to you, and you professionally, to the best of your ability, fulfill all your commitments to me. Rather than being a family, right? Let's be a sports team. Let us all be a sports team where you fulfill your commitments to me and I fulfill my commitments to you, and the two of us together ensure that our goal is complete. So I expect that you will show me discipline. If I am asking that you come live in the class and you attend classes live, you should do it. If I'm asking that on Sundays you should attend the test, give the test, you should do it. I want you to show commitment. कैसे दिखेगी commitment? Sometimes, you might ask that, sir, I have a family wedding to attend. नहीं. अगर आप वो attend कर सकते हो तभी, अगर आपके कोर्स कंप्लीट हो रहा है और अगर आपके टारगेट्स रीच नहीं हो रहे. You can't randomly take a 15-day break. You will not do these things, and you will show trust in the process. इस साल का रिजल्ट आएगा अभी यूपीएससी का in April. It will be out. The April has started. I think in 20-25 days the result will be out. I can speak about my credibility. I can speak about my team's credibility, and I can also speak about our result. Once the result comes, I'll show you the result also, and I'm sure that will boost your trust in us even further. 600 of our students are giving the interview. 600. Out of a total 3,000 people who give the interview, 600 are Sarrthi IAS students. So we are sure that we will be able to display the result to you. But we expect these 3 things from you. इसके अलावा मैं एक चीज और लिख सकता हूं, या इसी का वो एक्सटेंशन है इस ट्रस्ट का. So far
You have been very well behaved in the chat. It's been only 2 hours though. इसका मतलब क्या होता है? नाम नहीं लूंगा मैं किसी का. When I was teaching you this, or I was talking to you about this, process of stubble burning and the idea of combined harvesters and Pusa biodecomposer, etc., etc. I saw a message in the chat. I did not feel very good. I didn't point it out at that time. Somebody had written, "Sir, please get to the point." This is something we will not accept, regardless of whatever financial relationship might be between the two of us. ठीक है, financial relationship honestly for me is not important. My job here is academics. मेरे को पढ़ना पसंद आता है, पढ़ाना और पसंद आता है. That's what I do here. ठीक है, जो होना था उधर वो हो चुका है. मेरा काम अब आपको पढ़ा के इंश्योर करना है कि आप अपना बेस्ट एग्जाम दो, राइट? आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो. मैं उसी तरीके से सोचता हूँ. That's what my job here is. I guarantee that in the next 1.5 years I will study more than you study. This is my guarantee to you today. I still study 8 hours daily without fail, and I don't count class time in it. ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पढ़ाई कराना है. You need to show trust. This entire process I have built to ensure कि कुछ भी मिस ना हो. कुछ भी अगर आपको कहा जा रहा है, राइट, अगर आपको कहा जा रहा है कि यार ये चीज अटेंड कर लो, ये सेशन देख लो, तो देखो. Even if sometimes you might not understand the immediate logic, I will know कि वो क्यों किया जा रहा है. And beyond clearing the exam myself and having people who have cleared the exam under my guidance, इससे ज्यादा credibility मैं आपको नहीं दिखा सकता. इससे ज्यादा क्या ही है ना कि मैंने खुद क्लियर कर लिया and I can show you videos of students who have made it. इससे आगे और क्या ही है, राइट? इससे आगे तो आपको ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे. But at least even in that initial time, it is my request that you show me the trust, discipline and commitment that we desire. I hope you are all aligned on this. Let us now come to note making. Note making in this exam is not a one time process. ये एक one time process नहीं है, right? अभी in the beginning in this foundational subject time, we will be giving you these notes. We will be actually throughout we'll be giving you PDF notes. Means के भी मैंने आपको notes दिखाए. In the mains I will ask you to make synoptic notes. Actually mains में भी मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बहुत बार बोलता हूँ I will ask you to do this, और फिर अल्टीमेटली वो काम मैं खुद ही कर देता हूँ. तो मेंस में भी मैंने 1 पेजर नोट्स बनाए थे, अपने GS3 नोट्स के खुद ही बनाए थे. जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको देखा मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा. That is why I spend 8 hours a day on my table. This is what I am doing, right? तो एक्चुअली तो ये सारा काम मैं ही करने वाला हूँ, बट आपको आना चाहिए, इतनी सी बात है. अल्टीमेटली आई विल बी मेकिंग ऑल द नोट्स फॉर यू मोस्टली. अभी एटलीस्ट इन द बिगिनिंग फॉर द फर्स्ट 4 months, जो ये हमारा फाउंडेशन फेज है, इसमें यू विल बी हैविंग प्रिंटेड नोट्स, PDF नोट्स आपके पास होंगे, राइट? ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बोले, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यू विल बी हैविंग दीज प्रिंटेड नोट्स. इन प्रिंटेड नोट्स से, फ्रॉम दीज प्रिंटेड नोट्स देयर विल बी एन इंडेक्स यूज करके एक्टिव रिकॉल करो और इन्हीं को अपने फाइनल नोट्स रखो. डोंट ट्राई टू शॉर्टन देम, रिमेंबर फ्रॉम हियर ओनली. अगेन वो ट्रस्ट वाली बात आपको इसलिए कही थी बिकॉज आई नो दिस विल साउंड काउंटर इंटुइटिव. नोट मेकिंग में मजा आता है ना, इट सीम्स लाइक आई हैव डन समथिंग. मत लगाओ टाइम री रीडिंग में. जब लगाना होगा, जब नोट मेकिंग शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगा. अभी मत लगाओ. कीप दीज एज योर नोट्स, कि यही मुझे याद करने हैं. दीज आर द थिंग्स आई हैव टू रिमेंबर. Then I am committing to you that they will not be very bulky. अब मैं आपको 2000 पेज के नोट्स दे दूं और कहूं इनको याद रखो, तो ऐसा तो नहीं होगा. I will ensure they are not bulky. You please don't make short notes out of them. Don't, because words that are written there are relevant. And revise them how? Revise them through active recall. Randomly ऐसा भी होगा इस कोर्स में that I will take an active recall session with you without even telling you. आपको बताऊंगा भी नहीं, एक दिन पहले बताऊंगा, या आपको लगेगा आपकी नॉर्मल क्लास है और मैं आपके साथ आके एक एक्टिव रिकॉल सेशन ले लूंगा और नाम लेके उस दिन मैं बताऊंगा अच्छा आपको ये याद नहीं है, आपको ये याद क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ऑफलाइन. अगर ऑफलाइन होता तो फिर मैं क्लास में करता ये बात. बट जितना हम इसको ऑफलाइन बना सकते हैं हम बना देंगे, राइट? दैट आई विल टेक योर नेम एंड से कि ओ आपको ये याद क्यों नहीं है, आपने ये पढ़ाई क्यों नहीं करी, या आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया, एक्सेट्रा. सो अगेन कीप फॉर द नेक्स्ट 4 months जो नोट्स आपको अभी मिल रहे हैं, कीप देम एज योर फाउंडेशन नोट्स, कीप देम एज द वंस दैट यू हैव टू स्टडी. लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम देयर फॉर द मोमेंट.
एक्टिव रिकॉल हमने देखा, दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग दैट बूस्ट योर मेमोरी, तो ऐसे ही याद करेंगे। नाउ हमने फ्रेमवर्क्स भी देखे ऑफ हाउ वी हैव टू थिंक, वी हैव आल्सो सीन फ्रेमवर्क्स विद रिगार्ड्स टू दिस, जैसे हमने वो विमेन्स एम्पावरमेंट वाला फ्रेमवर्क देखा, या हमने पूसा बायो डीकंपोजर वाला फ्रेमवर्क देखा। नाउ एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी, ऑल्दो देयर आर 2 सेशंस अपकमिंग, वन इज विद वरुण सर, द सेशन विद वरुण सर इज largely for mentorship, कि हाउ मेंटोरशिप इज गोइंग टू रन, ग्रुप मेंटरशिप कैसे होगी, वन ऑन वन मेंटरशिप कैसे होगी, वो सारी बात करने के लिए वरुण सर का एक सेशन है। एक मेजर चीज जो हमने अभी कवर नहीं की है वो है करंट अफेयर्स, तो मुदित जैन सर के साथ आपका सेशन रहेगा विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स, कि न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या, अभी पढ़ना है तो कब पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और सर ने ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना है। सर खुद रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ही रीड्स 20 आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू एवरी डे, तभी मैं आपको कह रहा हूं जस्ट शो ट्रस्ट, काम हम इस लेवल का कर रहे हैं कि आप अगर इसको फॉलो कर लो, विद इन 3 months यू विल रियलाइज दैट यू आर वे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। कोई कहीं पे भी कैसा भी कोर्स अटेंड कर रहा हो, राइट, you will feel that you are way ahead of all of them. This is my guarantee to you. In 3 months, you will have this feeling. Just give us those 3 months on the basis of the trust that you have. That's all I'm asking. So we will have 2 sessions on this, but yes, I will speak about one-on-one mentorship once, right? So this is what we are doing. Not all of this group will be in one-on-one mentorship. So one-on-one mentorship का एक session है, एक तरीका है, and एक group sessions का तरीका है. Here you can talk to the person one-on-one. The group sessions are done in a group, and Varun sir will explain the detail about this to you. मैं बस यहाँ पे mention कर रहा हूँ so that everybody knows कि जो वरुण सर का session होगा, we will talk in detail about what is the process going to be in group mentorship sessions, what is the process going to be in one-on-one mentorship sessions, and Mudit then sir will talk to you in detail about current affairs. Now what is going to happen in the next few days? आज आपने मेरे साथ सेशन अटेंड किया, फिर आप वरुण सर के साथ सेशन अटेंड करोगे, फिर आप मुदित जैन सर के साथ सेशन अटेंड करोगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलिटी। तो पॉलिटी का भी एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, वी विल हैव वन पॉलिटी ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है, राइट, कि आपको पॉलिटी में अब नेक्स्ट 1.5 months यू आर गोइंग टू रीड पॉलिटी, तो पॉलिटी में सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे नोट्स बनने हैं, पॉलिटी में कुछ करना है क्या उन नोट्स का, कहां से रिवाइज करना है, स्पेसिफिकली फॉर दिस सब्जेक्ट वी विल हैव अ स्ट्रेटजी सेशन, देन योर क्लासेस विल स्टार्ट, इसके बाद आपकी क्लासेस होंगी, राइट, दिस इज द आइडिया। देन इसी क्लासेस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होंगे, इन्हीं क्लासेस के बाद आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, ठीक है, दिस इज द आइडिया। नाउ one more thing that I have to tell you with regards to all of this, this is the first session we have done together, है ना, this is the first session we have done together, it is 100% not the last session we have done together, ये last session नहीं है, ये first time है जब हमने interact किया है, हम ऐसे बहुत बार और अभी interact करेंगे, we will interact a number of times again about these things and other things as well, right? So I just want to ask you if you are feeling confident, because that is also important. आपको confidence आना चाहिए, you have taken the decision to be here at Sarrthi IAS. We will do everything in our power to ensure that you have the best outcome over the next 1.5 years. You just show us discipline, commitment and trust. बाकी आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो. I hope you are able to feel confident about the journey that we have together in the next 1.5 years. पहले आप वो बात बताओ. You will show up and I will show up and we will do our best and we will make it. This is the idea that we have over the next 1.5 years. ठीक है? Lastly, I know you have lots of doubts and queries in your head. अभी at the moment, I know you have lots of doubts and queries. फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप तीनों ओरिएंटेशन सेशंस देख लो. Since the three of us, अगर मुदित सर, मुझे और वरुण सर, जिन लोगों ने आपके 3 ओरिएंटेशन सेशंस लेने हैं, अगर आप इन 3 लोगों को कंबाइन कर दो तो these 3 people together have given 14 attempts to UPSC, have been selected 4 times
and have given the interview 5 times. ठीक है, ये टीम आपका सिर्फ ओरिएंटेशन ले रही है. 4 selections, 5 interviews, 14 attempts. ठीक है, तो विद दैट वी अंडरस्टैंड आपके दिमाग में क्या डाउट्स आने हैं, राइट. देयर माइट बी सम यूनिक थिंग्स, उसके लिए ही हमारे पास मेंटरशिप है एंड वी विल आंसर द डाउट्स आल्सो. बट फॉर नाउ लेट अस जस्ट स्टे फोकस्ड एंड अटेंड दीज ओरिएंटेशन सेशंस. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बचता है फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे. लास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है एंड दिस इज व्हाट आई विल एंड विद, एंड प्लीज राइट दिस इन दैट नोटबुक. और उस नोटबुक का क्या करना है अब मैं आपको वो भी बताऊंगा. यार, दिस एग्जाम इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन फॉर 1.5 years. होता क्या है कि हम जब इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वी आर वेरी मोटिवेटेड. कुछ रील्स देख ली आईएएस ऑफिसर्स की, है ना, देखा कि ओ देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द सिविल सर्विस, देयर आर अ लॉट ऑफ इमोल्यूमेंट्स इन द सिविल सर्विस, लॉट ऑफ बेनिफिट्स come to people who are in this. That's all true, right? That might all be true, but this is only an exam. You will clear the exam. जो आपने सिविल सर्विसेज में करना है वो उसके बाद करना है. Right now we will treat it like an exam and it is a marathon. जो अभी आप में स्पिरिट है, जो अभी आप में जल्दी है, जो अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, लेट्स ट्राई एंड मॉडरेट दैट ओवर द नेक्स्ट 1.5 years. कि रोज आपका मन करे कि आप उठो और आप पढ़ो. Every day you need to get up and study. Every day you need to work hard. Every single day. Not just in the first month, not just in the last month, but with every single day. And that is why the notebook that I told you to start with. In the first slide, in the first thing today, I said, make this notebook. Call this notebook your journal. Your academic journal for the next 1.5 years. And in this journal, every milestone, आप रोज तो नहीं लिख पाओगे. See, journaling every day, if I expect you to that you will journal every day, that is almost unrealistic. कई लोग कर लेते हैं, but every day is difficult. Every milestone you need to track. So at least at the end of each week, and this is a request, आप देखोगे इसका benefit. At the end of each week, write one entry in it, write one page, and write about how you have performed. Whether I did well this week, what all did I study this week, how much did I score in the test, and what I was feeling. See, I am not here only to deliver content to you. In this 1.5 years, there will be many times, since I can tell you about my journey, there have been many times when I was crying. There have been many times when I felt depressed, when I felt कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, this is too much for me, there is too much competition. Those entries need to go here. When you put your feelings on paper, and then when I will talk to you, we will talk again, we will discuss these feelings openly. When we'll have these entries on paper, our mental stability and our mental calmness and composure is also something that we have to develop over these next 1.5 years. हमें वो perseverance भी develop करनी है, and that is why I am recommending specially that you have a journal for yourself. Right? In the next 1.5 years, at least once each week, write in that journal. जैसे आज I would say, probably you can decide this better than me, but I would say if I was in your place that this is today a seminal event in my preparation. Seminal event is important event in my preparation. That today I have learned something about the mains exam. I have learned something about the prelims exam. I have learned something about how to remember. Write this down. Only academic things. आप अपनी feelings को भी लिखें, but related to academics. Right? I hope आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. आपको कोई पसंद है नहीं पसंद है वो सब ना लिखिए, उसके लिए you can have a separate journal. Right? Those things will also happen. They are all natural. I have had a girlfriend throughout the preparation. I've had a breakup during the preparation also. Okay? So since I am young, I'm 27, I can talk to you about these things. I know this will happen. Right? इसको हश करने की या वो करने की जरूरत नहीं है, और इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा during the prep. Because it is my job to ensure that you put your best foot forward. Content is one thing which I will give my everything to. But I am cognizant, since I have recently cleared the exam, I am cognizant of everything else that happens in this space. Right? So वो भी हम ensure करेंगे. Don't need to worry about that. But each week just write one entry here. Right? And in the next few days, tell yourself this thing constantly, आराम से. खुद को यही बात बताओ, आराम से. लंबी रेस है, आराम से. स्टार्ट करो, देखते हैं. स्टार्ट करो, देखते हैं. देयर विल बी टाइम्स जब मैं आपको कहूंगा रश करो. जैसे अब जो इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं लोग इस टाइम पे, उनको मैं कहता हूं रश करो. अब लास्ट 2 महीने रह गए हैं, अब सब कुछ पढ़ना है आपको, रिवाइज करना है.
बट अभी आपके लिए वो टाइम नहीं है. टेक इट इजी, right? Take it. There will be times when I will ask you to study 12 hours a day, but now is not that time. And if you burn yourself in the beginning, nothing will be left when that important running phase will come. So abhi, take it easy. We are starting out. The process is sorted. You are learning from very credible people. That you are learning from people who have been selected, who have given the interviews. आपको misguide होने ही नहीं देंगे. You will not miss out. हमारी job है to ensure that you don't miss out, right? And we are bloody good at our jobs. Okay, so don't need to worry about it. Right now, just tell yourself it's okay. Journal each week. आज के event के बारे में भी journal में लिखो. The next session is with Varun sir. I hope I was able to impart some good things to you today. I really enjoyed talking to you, and to all of you who attended this session and to who gave me your time. Thank you. If you show this to your parents, a huge thank you and namaste to your parents also from my side. Please उन्हें ये session दिखाना ताकि उन्हें भी समझ आए what you are doing for the next 1.5 years. ठीक है? Thank you for your time. Have a good evening. And now Varun sir will talk to you next time.